and welcome to Quick Shah, the biggest test series, the most anticipated test series, the much awaited test series. कब से इसकी चर्चा हो रही है? जब से इंडिया ने 2 टेस्ट सीरीज ऑस्ट्रेलिया के मैदान पे घुस के उनको सीरीज मारी है। पिछले 10 सालों से ना ऑस्ट्रेलिया इंडिया के घर में जीता है, ना इंडिया ऑस्ट्रेलिया के घर में हारा है। 10 सालों से इंडिया ने डोमिनेशन दिखाई है बॉर्डर गवस्कर ट्रॉफी में, लेकिन जिस टाइम अब इंडिया जा रहा है कुछ हालात थोड़े से खराब है। द किंग विराट कोहली इज नॉट इन फॉर्म, रोहित शर्मा पहला टेस्ट मिस कर रहे हैं, थोड़े से युवा बल्लेबाज युवा गेंदबाज इंडिया के इस बार मुकाबले में उतरेंगे और ऑस्ट्रेलिया के पास अपर एज इंडिया मीडिया भी रिपोर्ट कर रहा है और सब लोग प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि ये इंडिया सीरीज शायद ना जीत पाए। लेकिन आपको पता है कि जब नेट बॉलर्स इंडिया के पास थे, जब इंडिया का एक 11 नहीं बन रही थी और तब जाके गाबा का टेस्ट जीता था, दैट वाज एब्सोल्युटली क्या कहते हैं 15 से 20 सालों का एक बड़ा मोमेंट था इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री में। और अब वो सीरीज वापस आ गई। इंडिया 3-0 तो हुआ न्यूजीलैंड से, लेकिन इंडिया जो अब एक वाउंडेड इंडिया, एक जख्मी शेर की तरह पर्थ में उतरा और जिस तरह इंडिया की एक पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज नजर आ रही है अंडर जसप्रीत बुमराह इन द फर्स्ट टेस्ट, मजा आने वाला है। एज अ पाकिस्तानी बहुत एक्साइटेड हूँ इस सीरीज के लिए, क्योंकि जब क्वालिटी क्रिकेट आपको मिलती है ना तो आप क्वालिटी क्रिकेट की तरफ भागते हो, चाहे वो आपको एशेज में मिले, चाहे आपको बीजीटी में मिले, चाहे आपको वर्ल्ड कप्स में मिले। सो क्वालिटी क्रिकेट के लिए मैंने 2 क्वालिटी एक्सपर्ट्स बुलाए हैं फ्रॉम बोथ नेशंस। एक तरफ से मैंने अमान को बुलाया है फ्रॉम इंडिया एंड द सेकंड हैंड वी हैव रायन फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अमान को क्या कहते हैं बहुत सारा क्या कहते हैं सलाम देना चाहूंगा पाकिस्तान से। अमान कैसे और किस तरह देख रहे हो यार इस सीरीज को? दिस इज एन एब्सोल्युटली बिगेस्ट इवेंट ऑफ क्रिकेटिंग हिस्ट्री और मुझे लगता है कि ये वर्ल्ड कप से भी बड़ा इवेंट है, क्योंकि टेस्ट सीरीज क्रिकेट में आपको वो क्वालिटी नजर आती है, वो आपको चैलेंज नजर आता है, वो शायद आपको वर्ल्ड कप्स में भी नजर नहीं आता। First of all, I am very glad to be here to be part of this conversation with both of you, and I hope we will have some great discussion in this episode. And if you say about the series as whole, I think this is a very important series for both the teams, not only India, but I think for Australia as well. This is as important for Australia as for India. Yes, of course, as an Indian team, we are almost out of WTC context, of course, but Australia have to win 3 test matches or 4 test matches to reach there. Okay, so that's the thing. And if you say Jasprit Bumrah and most of our team, Rohit Sharma is not there in the first test. Virat Kohli is out of form. Yeah, that's our struggles. Of course, these are the struggles. But as a team, I think I still believe in our team to do well in the series. And that's the whole at the starting. I want to say. Okay, you are looking confident, mate. Like this is good कि आपका कॉन्फिडेंस इस टाइम हाई है, लेकिन इंडिया का थोड़ा सा ना पिछले टाइमों में जैसे अवाम ने भी देखा है स्पिन इशू आया है, लेकिन हमने हमेशा से देखा है इंडिया हैव बीन गुड अगेंस्ट बाउंस, इंडिया हैव बीन गुड अगेंस्ट पेस्ट। हाँ, सीम मूवमेंट लैटरल मूवमेंट क्या होती है वहां पे इंडिया थोड़ा सा स्ट्रगल करता है, लेकिन अगर हम लैटरल मूवमेंट सीम मूवमेंट की बात कर रहे हैं तो वी हैव द लाइक्स ऑफ पैट कमिंस, जॉश हेजलवुड, लेफ्ट आर्मर वन मिचेल स्टार्क को कैसे बोल सकते हैं आप। We have invited once again our friend Ryan. First of all, I want to congratulate Ryan. We won. Pakistan won 2-1 the ODS series. You predicted, I predicted. The T20s are just forgettable because we have Babar and Rizwan playing T20, so what we can do in that. But I just want to know how ones, didn't they, Matt? Yeah, straight ones. Absolutely straight ones. How are you looking at this particular series? Because the hype in Australia. I have read a newspaper of Australia, Virat Kohli, the king. In Hindi, they are writing that the king is here. The king has landed in Perth. Yashasvi Jays for the fire. Like Australia, I haven't seen Ashes hyping. I haven't seen the excitement of Ashes that is they are doing with BGT. So what is that? Because India won against Australia in the last 2 series. Now it's on Australia pride. I have been seeing Pat Cummins, Hazelwood, Stonis, Marsh. Everyone is giving statement since August. So why there is so much hype this time for the first time between Australia and India? I want to know
This from Brian. All right, so yeah, it's pretty much billed to be arguably the biggest series ever, and definitely could be the best since the '05 Ashes in England. Best two teams in the world, or we'd say best two teams in the world. Um, India have obviously hit a little slump recently against New Zealand, but best two teams in the world, probably going to make the World Test Championship final. We don't like the fact that we've been beaten twice in a row out here. Winning in India is tough, but losing at home twice in a row, we like watching good cricket. It's better when we win. It's huge because we've got a large Indian contingent living out here as well. So they're obviously hyped. They're wanting to see three in a row in Australia. Summer cricket's always huge over here, and I think it's all just boiling down. The Ashes. We love the Ashes. We love it. We love beating England. Obviously, they came out here last time 4-0. The time before that, it was 4 or 5-0. The time before that, it was 5-0. England come out and they lose. South Africa come out, they lose. Or recently Pakistan come out in Test matches and they lose. India come out and they win, and it's a very well, we've got to beat them now. We don't lose at home. Australia doesn't lose at home. So that's probably why it's so big. And they're talking up Kohli in the media. Obviously, it's Virat Kohli. The newspapers, as you mentioned, the newspapers, the king has arrived or the king's returned or whatever. Get a Hindi on there as well. They're talking him up because we haven't heard much from him. We haven't heard much out of the Indian camp regarding their players. They've, is it Gautam Gambhir who had a bit of a crack at Ricky Ponting. I just think he should keep his mouth shut. Don't give any fire to the Australian media because they'll build you up and they'll tear you down just as quick. So we haven't heard much. So there's a bit of, Virat Kohli, he's been, not incredible recently. They're building it up. They're building it up to be huge. It will be huge. I imagine Optus Stadium in Perth tomorrow and on the weekend will be rocking. They'll probably get a good crowd there, and it's one of those series where you go, it could go either way. I hope it's 5-0 demolition, but probably won't go that way. And it's just one of those series where everyone seems to be, this could be incredible. You've got two aging teams. You've got Australia. No one is under 30 in that team apart from Nathan McSweeney, who's making his debut. The Indian team. Sharma, I know he's not playing first test. Kohli, obviously they've had a few go. Mohammad Shami is injured, but he's getting on a bit. He's been around for a while. Ashwin, Jadeja. It's aging squads, and this is probably the last time we're going to see them at their peak. Exactly. So that's why I think it's huge. Going to be a good series, and yeah, 5-0. Anyway, 5-0. Aussie mentality, bold prediction again. So Yeah. Amaan, I want to get on you that how Ryan summed up that this hype is because India won last two times and how India have performed in the last two series. And India has absolutely dominated in Australia as well and in the as well. I just want to know like the circumstances behind 3-0 against New Zealand, and after that you don't have Rohit Sharma, Shubman Gill tomorrow, and a lot of new fast bowlers. They will be giving their heart out in the Perth Test. There is no Mohammad Shami, and you know what kind of flavor Mohammad Shami can possess. So, what do you think? What motivation will Team India will be getting tomorrow and will be taking out to the ground? I mean, my answer to this is first of all, when you are in Australia, you need to be motivate yourself first. If you are not confident enough, that will create problem for yourself as well. And if you talk about New Zealand 3-0, that was a nightmare for our team. Yes, we lost just in the all the we lost in the batting.
in bowling, in fielding. New Zealand were just better than us in all aspects. So of course, yes, our team are missing Rohit Sharma, Shubman Gill. Shubman Gill is a very big miss. Many people are saying that Rohit Sharma is very big miss. Mohammad Shami is also very big miss. But I think the one guy I will miss in the first test is Shubman Gill, because he's a kind of batsman who plays bounce very well. Yes, he is also very solid at the back foot, and that's the reason that we will miss Shubman Gill as well. And if you talk about Jaiswal, players like Jaiswal, it's their first series. Yes, and as Ryan said that the teams are aging at times. Virat Kohli is not at the best of his form. Yes, and Mohammad Shami is missing, and some new bowlers as well. Of course, Harshit Rana will maybe playing tomorrow, and Akashdeep may be playing tomorrow. And Mohammad Siraj not at Mohammad Siraj. If you've seen last 3-4 years, not in 2 years, okay, in 2 years, not best of his form. Okay, so that's the problem for our team, that we are not really. Yep. Yeah. Carry on. So our team is not really confident, of course, but it's Australia, and you need to be confident to play in Australian conditions. And my English is a Exactly. bit You of need weaker to side, so I be. was worried from my side. Uh, hmm. ना All right. आप ये क्या कहते हैं, मुझे बस ये बताओ अमान कि गौतम गंभीर पे जितना क्रिटिसिज्म हो रहा है, जितना सब पे के एक तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, और जो चर्चा हो रही है कि गौतम गंभीर शायद इस सीरीज अगर हार गए तो गौतम गंभीर को हटा दिया जाएगा, मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है। गौतम गंभीर की मेंटालिटी अगेंस्ट ऑस्ट्रेलियन हमने पहले देखा, ही हैज बीन absolutely bold. Ryan, you also heard that Ricky Ponting comment. Who is Ricky Ponting to comment on India? Have you heard it? Yep. One of the Yeah, best Gautam batters ever. Gambhir, I think yes. when you're a great, you can criticize as much as you want. When you're as good as Ricky Ponting, you can say whatever you want. He, They can't take and that एक और record चीज away जो from him. IPL auction वाली भी चल रही है, the IPL auction is colliding with this series. So आप गौतम गंभीर का विजन along with रोहित शर्मा, क्योंकि बुमराह ने एक टेस्ट के लिए होना, इस सीरीज में इन दोनों पे कितना प्रेशर था? I think there will be a lot of pressure on Gautam Gambhir, because I think he's a bit of a loud mouth. He speaks too much sometimes. And if you are saying something against a legend like Ricky Ponting, that's pretty much a big thing in my opinion. If you are saying that, and of course, pressure will be there on Gautam Gambhir, because we lost 3-0 against New Zealand in our home soil. We haven't lost since 2013 against England. It was the last time we lost at home, and then suddenly we lost against New Zealand at home. So the pressure is obviously there, and the mentality need to be aggressive. I mean, our team loves to play aggressive cricket. If you see our batters in our this team, Jaiswal, Shuman Gill, Rohit Sharma, Virat Kohli, Sarfraz Khan, Dhruv Jurel, they all are aggressive batsmen. There is no Pujara, there is no Rahane. That can be a bit of headache for our team. Of course, we will miss them, but it is what it is at the end. And Gautam Gambhir, I mean, it will be a. I mean, if we lose the if we lose the series, okay, if we lose the series, it will be a bit harsh on Gautam Gambhir to get out, because it's Australia at the end. Yes, it's not like you are going to play Bangladesh or something like that. So I mean, yes, pressure is there on Gautam Gambhir, but of course he need to be at his best as coach and as manager to be in this to make it a good series for Indian cricket team. That's my answer. Okay, तो आप इसे समझते हैं कि गौतम गंभीर पे अच्छा खासा प्रेशर होगा, गौतम गंभीर will be under immense pressure. Ryan, I want It will be to hard for them. get quickly, yeah, I want to get quickly on the batters. What kind of batters Australia has The for the whole batters series? we've got. Yeah, All they right. have Well, announced. Yeah, just all right. completing my answer. They Yep. have announced the test squad for just one test. I think they will be announcing it by test. Yeah. I just want to know about the openers dilemma as well and the batters, because Australian batting hasn't been kind. I think we can say the word like exceptional. They've been good in No, it hasn't. Pakistan It series. hasn't. Yeah. In the Pakistan Test series, they also fluttered against Ramir Jamal and Mir Hamza.
and we've seen against Shama Joseph how he destroyed Australia in Brisbane. So Yeah. I just want to know why is that? Because of the baseball thing, the T20 mentality, poor shot selection, no patience, and temptation. What is one word, or what will be you describing Australian batter doing errors and errors after test after test? Well, I think I've actually listened to a couple of interviews and stuff, namely one with Usman Khawaja, and he said that the pitches in Australia have actually been tougher to bat on recently. They've been a lot greener. They've been a lot moved off the deck a lot more, been more bowling decks than batting decks. And I think that's had a thing. You look at our team when you usually when you come to Australia, it's a road, batter's paradise. It's rattle off 100 and 130, 140 balls. As you know, you saw Michael Clark do it all the time, pretty much. He'd score 100, striking at 75, pretty consistently. So I think the decks have gotten a bit maybe too bowler friendly recently. What comes to mind is the Gabba in 21 or 22 against South Africa, where the test was over in 1.5 days. We rolled them, I don't know, for not much. We were batting on day one. It was second innings on day two and got wrapped up on day two. I was there actually. And, look at the Gabba pitch again in 2020 or 2021 against England. Obviously, where Rory Burns got bowled around his legs first ball. And Green again. You've seen a lot of bowler-friendly pitches recently, and I think that's not helped our batting because, we went to New Zealand earlier this year. Cam Green scored a big 100. Alex Carey got a 98 not out. Obviously, Smith didn't do too well at the top of the order again, but we seem to bat better there as opposed to in Australia. So I think the pitches have been part of it. But looking at our batters, so obviously we got no Warner. I think he was a culprit of that bad batting as well. He can't play a moving ball. You look at his record in England. Ball moves, can't do anything. He averages 26. So he loved it when it was roads because you can just. It's true. It's like it's bouncing off concrete. You look at our batting. We've got Khawaja, who's been incredible since he returned against England. McSweeney, I'll come on to him in a bit. Labuschagne, Smith, Head, Mitchell Marsh, Alex Carey's the top run scorer in Sheffield Shield this year. So he's not only a keeper, he's a batter. Josh Inglis, as a backup batter, he's averaging 97 or 99 in the Sheffield Shield this year as well, and he's a keeper. So I actually think he's in there for his batting, not his keeping. And then Nathan McSweeney, he's averaging in the 90s in the Sheffield Shield this season as well. Scored a big 100 in the One Day Cup as well for South Australia. He's a good player. He's coming in very early pretty often, so they just promoted him to opener. He's responsible when he plays. He leaves the ball well. I know if in the India A game, Australia A game, he got it 88 not out, chasing 200 or something, or maybe one something, 200, close to that. He's a good player. He's 25, 26, bowls a bit of off spin as well. I like our batting this summer, and if it's going to be a lot more pace bounce coming through, I wouldn't be surprised if you see runs scored at a quick rate by a lot of people this summer, especially the Australian batsmen. So you summed up very quickly and summed up very deeply how Australian batters will be doing. अमान सेम सवाल है मेरा आपसे, इंडिया के बल्लेबाज, इंडिया के, चलो ऑस्ट्रेलिया ने तो चलो फिर से हमने पहले देखा कि ऑस्ट्रेलिया के बैटर्स भी कहीं ना कहीं स्टेप अप किए, लेकिन यार इंडिया की बैटिंग को क्या हुआ है? लिटरली एक टाइम पे मुझे याद है कि जब इंडिया की बॉलिंग का कोई नामो निशान नहीं होता तो हमेशा इंडिया की बैटिंग उन्हें बचाती थी, द लाइक्स ऑफ द्रविड़, लक्ष्मण। अभी भी विराट का स्लम चल रहा है, रोहित उस तरह आउट ऑफ टच है, शुभमन गिल करते हैं, इन एंड आउट करते हैं, जायसवाल पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है, पंत पे तो सारी पूरी टीम ही डिपेंडेंट है, और अब जा रहे हैं पर्थ जैसी कंडीशंस में जहां पे पहला टेस्ट है कल सुबह। क्या समझते हैं आप इंडिया की कल की जो लाइकली हमें बैटिंग नजर आ रही है, जिसमें डेविड पडिक्कल है,
जिसमें हमारे पास के राहुल है। के राहुल पे जितना क्रिटिसिज्म है आप सबके सामने है कि के राहुल को किस तरह क्रिटिसाइज किया जा रहा है और के राहुल पे किस तरह लोगों ने तलवारें लेके फिरी है। वो उस बंदा को कभी 6 पे बैटिंग कराते हो, कभी 3 पे, कभी 2 पे, कभी 1 पे। सो इंडिया की बैटिंग तो मुझे ज्यादा वीक लग रही है इन माय ओपिनियन अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। लेकिन हैविंग विराट कोहली, हैविंग ऋषभ पंत, एंड आई विल बी आल्सो सेइंग हैविंग ध्रुव जुरल, जो उसने क्या बैटिंग की है, क्या खूबसूरत बैटिंग की है इंडिया ए और ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ। ध्रुव जुरल हैज बीन स्पॉटलाइट। ही प्लेड एन एक्सीलेंट नॉक अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया ए। और क्या समझते हो आप यार कि क्या ये इंडिया की बैटिंग, पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क, जॉश हेजलवुड, अब तो मानस लबुशेन ने भी मीडियम पेस कराना शुरू कर दिया कि उन्होंने विकेट लेनी है विराट की। लबुशेन इज डूइंग मीडियम पेस टू get out Virat. He also commented. Have you heard it, mate? Ryan, the Labuschagne comment. Yeah. Well, yeah. Well, I've actually watched it with the Sheffield Shield, and he's captain of Queensland. So he's giving himself a lot of overs bowling He seam has up with the also ball. a lateral movement or seam up. Yeah, he is. He knows seam up, tries to move it away by the looks of it. Oh, that's good. That's good for Virat then. He's actually been bowling pretty well for Queensland. And it's Marnus. It's funny to see. He's trying to bowl. He's trying to start bowling bouncers and trying to push 135. Be a genuine medium pacer. It's funny to watch. I wouldn't be surprised if he takes a couple That of will wickets. be fun It would to just be watch. so annoying. That will be fun to watch, partners. और उस तरह आपके पास फिर नेथन लाइन भी है। तो यार अमान, आप किस तरह देखते हो यार इंडिया की बैटिंग को, जो इस टाइम आई थिंक इंडिया की बैटिंग लो ऑफ कॉन्फिडेंस है, मुझे तो यही। तो यहाँ से जरा मैं हिंदी में बोलना चाहूंगा यार थोड़ा सा, ताकि आप थोड़ा रैन को समझा दें ताकि मैं अच्छे से समझा पाऊँ, एक्सप्लेन कंटिन्यू कर पाऊँ, क्योंकि कंटिन्यू थोड़ी कंटिन्यू, प्रैक्टिस कोई कम है मसला। ना। तो ये है कि देखिए इंडिया की बैटिंग लाइनअप जो हम पिछले कुछ सालों से 2014 में आए थे, जब हमारी बैटिंग स्ट्रांग हुआ करती थी। 2014 में, 2014 एंड 15, जब विराट कोहली स्कोर्ड मैनी रन्स, ओके, एंड जब स्टीव स्मिथ ने भी 700 को ज्यादा अराउंड रन्स बनाए थे उस सीरीज के अंदर। तो जब हमारी, और उसमें मुरली विजय हुआ करते थे, चेतेश्वर पुजारा वाज वेरी गुड एट दैट टाइम। तो उस टाइम पे हमारी टीम अच्छी हुआ करती बैटिंग। फिर हम 2018 में आए, जब भी हमारी टीम बैटिंग अच्छी थी। आपको अगर आप बात करें चेतेश्वर पुजारा की, विराट कोहली की, ये सब मतलब हमारे एक बैटिंग का एक आप कह लो स्क्वाड बन चुका था। हमारी मतलब 4 जो बैट्समैन थे, हमारे मेन इंपॉर्टेंट बैट्समैन थे ये 4, पुजारा, रहाणे, विराट एंड मुरली विजय, एंड समटाइम रोहित शर्मा और अदर अजिंक्य रहाणे समटाइम ऐसे कुछ मतलब खेलते थे। उसके बाद हम पिछले पिछले साल जब आए, मतलब पिछले टाइम जब आए, 2021 सीरीज के अंदर, लॉकडाउन वाली सीरीज थी जो हम जीत के गए। तो वहां पे हमारी बैटिंग भी ऐसी ही थी, मतलब बहुत स्ट्रांग नहीं थी। शुभमन गिल का डेब्यू हुआ वहां पे, ठीक। और वहां पे वॉशिंगटन सुंदर बैटिंग करने आ रहा है गाबा वाले टेस्ट मैच में, ऋषभ पंत वहां पे अलग ही गॉड मोड में चले गए थे उस सीरीज के अंदर, तो विद द बैट। तो वो उस तरीके का था। इस बार जो चैलेंज है इट विल बी वेरी डिफरेंट, बिकॉज देखो ये ना, वो देखो 18 में हम जब सीरीज जीते, तो ऑस्ट्रेलियन टीम का ये था कि यार वो उनकी टीम कमजोर थी। 2018 में स्टीव स्मिथ भी नहीं था, डेविड वार्नर भी नहीं थे, दोनों ही टीम से बाहर थे वो बैन की वजह से। तो हम 2021 में आते हैं। 2021 में क्या होता है कि हमारी टीम कमजोर होती है, बट पता नहीं कुछ मैजिक होता है, मिरेकल होता है, एंड ऑस्ट्रेलिया समहाउ मतलब अच्छा नहीं खेलती उस सीरीज के अंदर। वो पहला टेस्ट में 36 पे 36 ऑल आउट करते हैं हमको एडिलेड पिंक बॉल टेस्ट में। उसके बाद सेकंड टेस्ट में हम कमबैक कर लेते हैं, है ना। और उसके बाद हम फिर सिडनी में ड्रॉ कर लेते हैं और जैसे तैसे गाबा में हम जीत जाते हैं। लेकिन इस बार जो चैलेंज है वो बहुत डिफरेंट होने वाला है। उसका सिंपल से रीजन है, जो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट हम 3-0 व्हाइट वॉश हुए। एक तो वो बहुत ज्यादा हमारे लिए खराब चीज है। लिखा क्या? हाँ जी, हाँ, कैरी ऑन। तो यही दिक्कत है कि जो 3-0 हम न्यूजीलैंड से हारे, वो उसने हमारा सारा कॉन्फिडेंस ले लिया है। उस सीरीज से पहले तो हम लोग भाई आसमान में चढ़े हुए थे बिल्कुल ही। हमें लग रहा था कि हम तो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी बिल्कुल ही मतलब जीत के आएंगे, ऑस्ट्रेलिया में 3-2 करके आएंगे, 4-1 करके आएंगे, ऐसा हमारी सोच थी इस तरीके से। बट हम न्यूजीलैंड से हार गए, हम आसमान से नीचे एकदम जमीन पे आके आके लेट गए बिल्कुल ही। तो अब क्या हाल क्या है, अब रोहित शर्मा है नहीं, शुभमन गिल मैंने अभी बोला कि इंपॉर्टेंट प्लेयर है हमारा, क्योंकि बैकफुट पे बहुत अच्छा गेम है उसका, है ना, और पेस को पसंद करता है, चाहे शॉर्ट बॉल फेंक लो, कुछ भी फेंक लो। स्पिन के अगेंस्ट वो भी स्ट्रगल कर रहा था न्यूजीलैंड में, न्यूजीलैंड की स्पिनर्स के अगेंस्ट, बट शुभमन गिल हमारा बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है। और अगर मैं बात करूं जायसवाल की, भाई ये फर्स्ट फर्स्ट सीरीज है एज अ बैट्समैन ऑस्ट्रेलिया में। और आपने जायसवाल को साउथ अफ्रीका में बैटिंग करते अगर आपने देखा हो, तो भाई ही लुक्ड क्लूलेस अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, जायसवाल। तो मेरा यही है कि भाई बाउंस करना इतना आसान होगा क्या ऑस्ट्रेलिया में? ऑब्वियसली साउथ अफ्रीका से पिचेस बेटर होंगी ऑस्ट्रेलिया के अंदर, पिचेस काफी बेटर होंगी ऑस्ट्रेलिया में साउथ अफ्रीका से, थोड़ी ट्रू होंगी। साउथ अफ्रीका में पिचेस थोड़ी सी ऊबड़ खाबड़ होती है, इतना आसान नहीं होता बैटिंग करने के लिए। और फिर बात करें शुभमन गिल, मैंने बोल दिया, विराट कोहली के रन नहीं आए 5 साल से,
5 साल नहीं, मतलब काफी टाइम से विराट की सेंचुरी नहीं आई है टेस्ट क्रिकेट में, है ना, पिछले कुछ काफी टाइम से। और मैं कहीं स्टेट पढ़ रहा था, कुछ 24 का एवरेज है 2024 के अंदर विराट कोहली का, या और भी कम है, 19 का एवरेज है शायद एज टेस्ट क्रिकेट के अंदर, तो उनकी बिल्कुल ही रन्स नहीं है। ऋषभ पंत ले देके ऐसा ऐसा बैट्समैन रहता है यहाँ पे जिसको मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस है। अब देखो ध्रुव जुरैल की लोग बात कर रहे हैं सब के, ध्रुव जुरैल ठीक है, बट वो ऑस्ट्रेलिया ए टीम थी, वो बॉलिंग डिफरेंट थी, वो पिचेस डिफरेंट थी, वो एटमॉस्फेयर डिफरेंट था, वो प्रेशर ही डिफरेंट था। अब यहाँ पे जब आप खेलोगे मिचेल स्टार्क के अगेंस्ट, नेथन लायन के अगेंस्ट, पैट कमिंस के अगेंस्ट, स्कॉट बोलैंड जैसे बॉलर्स अगर हैं, जॉश हेजलवुड तो मुझे ऐसा लगता है एक ऐसा बॉलर होगा जो कि बहुत बहुत टफ होने वाला है, बहुत ज्यादा टफ होने वाला है, क्योंकि तो सब लोग बात करते हैं पैट कमिंस और मिचेल स्टार्क हमेशा ना लाइमलाइट ले जाते हैं हेजलवुड जैसे मतलब बॉलर के ऊपर से। बट बात क्या है कि जॉश हेजलवुड जैसा जो बॉलर है, मतलब उसका टप्पा इतना इतना सही है, वो लेंथ रूम देता नहीं है, हाफ बॉल देता नहीं है, शॉर्ट पे जरा बॉल देता नहीं है, उसकी उसकी कहाँ रहती है, ऑफ स्टंप पे बॉल रहती है लगातार, फोर्थ स्टंप पे बॉलिंग करता रहता है। हमारी अगर बैटिंग देखो आप, रोहित शर्मा 4 बॉल डिफेंस नहीं हुई तो निकल के छक्का मारने चले जाते हैं, आपको पता ही है रोहित शर्मा का सीन क्या चल रहा है, वो सेल्फलेस बैटिंग करनी है उनको, ये सब करना है। जायसवाल का भाई हमने देखा कि न्यूजीलैंड के फास्ट बॉलर्स ने उनको बिल्कुल बांध के रखा है एक जगह पे, इतना उनको कभी रूम दिया ही नहीं। तो ऑस्ट्रेलिया से हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वही चीजें होने वाली है, विद मोर पेस एंड मोर बाउंस। और अगर हम बात करें फिर, चलिए शुभमन गिल तो है नहीं, उनकी क्या बात करेंगे, देवदत्त पडिक्कल। हमारी बैटिंग का पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, मैं आपको बोलूं पोटेंशियल की कोई कमी नहीं है हमारी बैटिंग के अंदर। पोटेंशियल वाइज तो यार हमारी बैटिंग ऐसी है कि 500 रन भी बना सकती है पर्थ की ऐसी पिच पे। लेकिन बात क्या है, लेकिन दिक्कत ये है कि यार एक्सपीरियंस नहीं है इन लोगों के पास। और अब बात करें फिर केएल राहुल की, केएल राहुल का हम कल डिस्कशन भी कर रहे थे रात को कि हम बात कर रहे थे कि ओवरसीज में उसने, बट 10 साल से खेल रहा है वो, 10 साल से खेल रहा है, 2014 से वो खेल रहा है केएल राहुल। जो बंदा 2014 से खेल रहा है, उसकी 4-5 सेंचुरी तो आई जाएंगी ओवरसीज में, 50 टेस्ट मैच खेल चुका है वो इंडिया के लिए, 50 टेस्ट मैच खेल चुका है इंडिया के लिए, और 30 का 32 का उसका एवरेज है, जो कि बहुत कम है यार, जो कि बहुत ज्यादा कम है। ऑब्वियसली उसके साथ होता है, कभी उसको ओपनिंग करा देते हैं, कभी उसको नीचे खिला देते हैं, कभी मिडिल ऑर्डर में खिला देते हैं, बट एक क्वालिटी बैट्समैन अगर 50 टेस्ट में कोई खेलेगा तो यार वो रन तो बनाएगा ना एट द एंड कहीं ना कहीं। और एक रीजन भी है कि केएल राहुल की पोजीशन शिफ्ट क्यों होती है, वो इसलिए होती है केएल राहुल ने किसी पोजीशन पे अपने आप को कभी सेटल नहीं करा अच्छे से। हाँ सेंचुरी बनाई, कभी ओपनिंग, कभी नंबर सिंगल के रन बना दिए साउथ अफ्रीका में जाके, बट कभी अपने आप को मतलब 4-5 उनकी नहीं ऐसी आई ही नहीं कभी भी कि जहाँ पे ऐसा लगा हो कि यार कि भाई ये तो मतलब बैट्समैन है, मतलब ये बंदा तो हमारा मेन प्लेयर है, ऐसा कभी हुआ ही नहीं। तो यही रीजन है कि केएल राहुल को ऊपर नीचे करते रहते हैं ये लोग। और बात करें फिर रविंद्र जडेजा, मुझे तो लगता है कि रविंद्र जडेजा फर्स्ट टेस्ट मैच खेलने वाले हैं पर्थ में, क्योंकि हमारे बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है ओवरसीज कंडीशन में। रविंद्र जडेजा की अगर बात करूं, बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है ओवरसीज कंडीशन के अंदर। और मैं बात करूं उसके बाद, जो ध्रुव जुरैल की बात कर रहा था मैं, कि ध्रुव जुरैल अच्छे लगे, बट वही है भाई, देखने वाली बात होगी। इंटरनेशनल में इंग्लैंड के लिए अच्छा करा था, वो घर पे खेले थे हम। ऑब्वियसली उन्होंने इंडिया इंडिया मतलब ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग करी, बट भाई वो एक अलग ही मैच था, वही कह रहा हूँ। और देवदत्त पडिक्कल के लिए मैं यही कहूंगा कि बैटर बहुत तगड़ा है वो, अगर आप देखना, हो सकता है भाई वो इस सीरीज में 2 टेस्ट मैच खेल जाएगा तो वो 100 भी मार दे, इस लेवल का बैटर है वो। इंग्लैंड के अगेंस्ट वो खेला था तो उसने 100 भी बनाई थी, 100 नहीं 50 ही बनाई थी, काफी सॉलिड 50 धर्मशाला में जाके, यहाँ पे फास्ट बॉलिंग हेल्प हो रही थी काफी ज्यादा। तो यही चीज देखने वाली बात होगी कि यार कि किस तरीके से होगा हमारी बैटिंग के लिए। तो भाई हमारी बैटिंग पे तो प्रेशर ऑफ कोर्स है ही है, बैटिंग पे काफी प्रेशर है। और मुझे ये लगता है हमारी बैटिंग के अंदर ना, वो आप बात कर रहे थे चेतेश्वर पुजारा ऐसा बैट्समैन जो हम मिस कर रहे हैं, जी पुजारा, हाँ बिकॉज बिल्कुल यार, ये मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगा यार अमान, द स्टेबिलिटी पुजारा प्रोवाइड्स, द स्टेबिलिटी एंड द पेशेंस। पुजारा ने जब लास्ट टाइम टूर किया था इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया का, तो आपको एक मजे की चीज मैं बताऊं, पुजारा ने 2600 डिलीवरीज खेली थी, मतलब तकरीबन आप कर लो तकरीबन 2500 उस बंदे ने डिलीवरियां ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट में खेली थी। और तकरीबन वो एक ESPN पे उसका ग्राफ था कि उसमें से 45 डिलीवरीज उसने खाई थी, यहाँ पे कभी खा रहा है, कभी यहाँ पे खा रहा है, कभी यहाँ पे खा रहा है। गाबा वाला टेस्ट आपको याद है, उस बंदे की ऑस्ट्रेलिया में स्टैट सुनो तो 21 इनिंग्स में उसके 993 रन है, स्ट्राइक रेट उसका 37 का है। आप ये इससे जान लो कि क्या पेशेंस वो अपने पास रखता है। और 47 की एवरेज है विद 300। ये स्टैट्स थे पुजारा के ऑस्ट्रेलिया में। और रहाने की जहां बात करते हो, 23 इनिंग 884 रन, 43 का एवरेज, 250। तो इन दोनों सीनियर्स जो थे लास्ट टाइम आपके पास, जिन्होंने आपको इतनी स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड की, और उसके साथ साथ जब आप कोलैप्स करते थे तो ये दोनों वहां पे क्या कहते हैं उधर बचा लेते थे। काफी टाइम मैंने देखा है कि जब भी कोलैप्स ट्रिगर होने वाला होता था, या तो पुजारा के साथ पार्टनरशिप लग रही होती थी या रहाने के साथ पार्टनरशिप लग रही होती थी। इन दोनों के शूज अब कौन फिल करेगा, क्योंकि बड़ा चैलेंज है,
बड़ी अपॉर्चुनिटी है यंगस्टर्स के पास, क्योंकि अगर इस बार कर दिया तो ये सालों तक इतिहास में याद किया जाएगा, जिस तरह पुजारा और रहाणे को आज तक लोग याद करेंगे। इतना हाइप नहीं किया जाता, विराट कोहली को हाइप किया जाता है, ऋषभ पंत को हाइप किया जाता है, बॉलर को हाइप किया जाता है, लेकिन मैंने इतनी हाइप पुजारा और रहाणे की नहीं देखी। सो आप कैसे समझते हैं कि पुजारा और रहाणे की शूज कौन किस तरह फेल करेगा, क्योंकि इंडिया की उस टेस्ट मिरेक्युलस विन में बहुत बड़ा हाथ था इनका। देखो अगर आप मुझे बोलोगे इनके शूज कौन फिल करेगा, देखो पुजारा के तो शूज फिल करने वाले बैट्समैन नहीं है। अब तो वो बैट्समैन ही खत्म हो गए जो बॉलें खेल रहे हैं, 200 बॉलें खेल रहे हैं, जो 40 बॉल खेल के अगर जीरो पे भी खेल रहे हैं तो उनको भरोसा है कि अगली हम थोड़ी बॉल खेल के रन बना सकते हैं। आज तो 4 बॉल बैट्समैन खेलता है। हमारी टीम की यही सबसे बुरी बात है हमारी इस टीम की, कि 4-5 बॉल डॉट होती है तो बैट्समैन एकदम से खराब शॉट मारने को दौड़ता है। तो ऑस्ट्रेलियंस तो ये पसंद करेंगे ना हमारी टीम के, और तो वही बोल रहा हूँ मैं, शूज फिल करने के लिए तो पुजारा का तो कोई भी नहीं है। अजिंक्य रहाणे के लिए मैं कह सकता हूँ, देखो सरफराज खान ने घर में परफॉर्म अच्छा करा, उसके बाद हालांकि चलो वो फ्लॉप हो गए, 2 मैच में उनके रन नहीं बने, बट मुझे नहीं पता टीम भरोसा नहीं करती सरफराज खान के ऊपर। ये टीम ओवरसीज कंडीशन में तो सरफराज के ऊपर बिल्कुल भरोसा नहीं करते इनको। मतलब देखो मैं ये मानता हूँ, ऑफकोर्स मुझे भी दिखता है, हम बैटिंग कर रहे हैं, आप सरफराज की देखें तो आप भी अगर देखो तो आपको लगेगा कि हाँ इसको फास्ट अगेंस्ट दिक्कत होगी, जिस तरीके से पोजीशन में चले आता है अगेंस्ट बाउंस। बट यार यही बात है ना, अगर आप किसी मैदान में उतरे ही नहीं तो आपको जज किस बेस पे कर सकते हो? नेट्स की बेस पे अगर जज कर रहे हो खिलाड़ी, तो नेट्स में तो ऐसे बहुत से खिलाड़ी है ना जो बहुत तगड़ा खेलते हैं नेट्स के अंदर। तो सरफराज खान के बाद मेरे को लगता है नाइंसाफी तो है ही है, बट अब जो है सो है। तो मैं मुझे लगता है ध्रुव जुरेल एक ऐसा बैट्समैन है जो अजिंक्य रहाणे की शूज फिल करने को बहुत बड़ी बात है, बट कर सकता है, उसके अंदर है वो बात, उसके पास वो क्वालिटी है, उसके पास वो टेक्निक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ध्रुव जुरेल कर सकता है ऐसा। और पुजारा की बात करें, अगर पुजारा की जैसे आपने बात करा कि उसने 2000 प्लस कुछ बॉल खेली थी, तो पुजारा का सबसे बेस्ट चीज क्या है, जो पूरे की बॉल होती है लाल बॉल ऑस्ट्रेलिया में, आपको अगर 20 ओवर आपने इसके निकाली थी स्टार्टिंग में, तो ये बॉल ऐसी हो जाती है कि जहाँ पे आपको रन बनाने को भी मिलते हैं, तब तक ये नई बॉल नहीं दी जाती है। तो पुजारा का काम ये था, फिर आप देखो 2018 में उसने बहुत रन बनाए। 2018 में तो ही वॉज, मतलब वो आउट ही नहीं हो रहा था 2018 सीरीज में पुजारा। बट 2021 में उसने उतने रन नहीं बनाए। अगर आप देखो उसकी 40, 50, 60, हाईएस्ट ऐसे कुछ रन थे। बट सब उसने काम क्या करा था, वो जब आउट होता था ना, वो 40 ओवर तक होते होते आउट होता था। 40 जब ओवर हो जाते हैं, जब बॉल जब वो पुरानी हो जाती है तो वो कुछ नहीं करती भाई, तो स्पिन ही कुछ उससे हो जाए तो हो जाए, बाकी उससे भाई इतना कुछ भी नहीं होता बॉल के साथ। तो ये खास बात है भाई पुजारा की। अब मैं ये देख रहा हूँ शुभमन गिल भी नहीं है, और शुभमन गिल पुजारा तो है नहीं। शुभमन गिल अपने शॉट खेलता है, उसमें रिस्क होता है आउट होने का। तो मुझे यही डर है यार कि पुजारा रहाणे के ना होने से, देखो और पुजारा शुभमन गिल रहाणे अब का पहले ड्रॉप टेस्ट में भी नहीं है, पहले टेस्ट में भी नहीं है शुभमन गिल। पहले टेस्ट में भी नहीं है, लेकिन पुजारा रहने का, देखो पुजारा रहने का ड्रॉप होना को मैं ये नहीं मानता कि गलत था। अगर आप पुजारा रहने के नंबर्स देखिए ना पिछले 2 साल के अंदर, मैं एक स्टैट पढ़ रहा था, अजिंक्य रहाणे की पिछले 20 टेस्ट इनिंग में 23 की नहीं एवरेज है। अमान, अमान देखो ट्रांजिशन तो होनी थी, अब आपने वो यंगस्टर्स तो पे फॉल वो करना हो था, गया, अपने यंगस्टर्स पे वो तो हो गया। ऑब्वियस होना था। लेकिन अब मैं कह रहा हूँ जो सर्कमस्टांसेस है, वर्ल्ड लाइन पे लगा है इस टाइम, बॉर्डर गवस्कर से ज्यादा इंडिया को वर्ल्ड की परेशानी है, क्योंकि रोहित शर्मा एज अ कैप्टन T20 वर्ल्ड कप जीत गया। अब इंडिया डेस्परेट है कि इंडिया आईसीसी ट्रॉफीज का जो जिंक्स उन्होंने ब्रेक किया, वो आहिस्ता आहिस्ता ट्रॉफीज जीतता जाए। मैं इंडियन मीडिया जो क्या कहते हैं, जिनकी ख्वाहिश मुझे नजर आ रही है, जो वो चाहते भी है, मैंने काफी लोगों को, विक्रांत गुप्ता वगैरह को सुना है। सो मुझे लगता है कि पुजारा और रहाणे एक बिगनेस है, लेकिन ध्रुव जुरल को भी आपको क्या कहते हैं इतना, मैं कह सकता हूँ कम रिमार्क्स नहीं देने चाहिए। लेकिन हाँ, पुजारा और रहाणे का ना होना अब इंडिया की बुरी किस्मत कह सकते हैं या गलत टाइमिंग कह सकते हैं, लेकिन मैं यही तो कह रहा हूँ कि अपॉर्चुनिटी फिर इन यंगस्टर्स के पास आए और आके प्रूव कर दे। अब मैं रायन के पास जाना चाहूंगा। रायन, ही समड अप एवरीथिंग अबाउट पुजारा, व्हाट पुजारा हैड, ही प्लेड 2600 balls in that specific tour at a strike rate of 37. Australia were absolutely desperate to get him out, and Rahane, whenever a wicket goes, they both can come and bring a partnership, and Australia are short of plans. He also summed up the low of confidence of batting and what kind of liability KL Rahul is to the team. So, how will be you exploiting a low confidence Indian batting? And I am coming to our next topic, the bowlers. Pat Cummins, the captain, and the bowler, Josh Hazelwood, the tactical bowler, Mitchell Stark, fiery pace,
bowling the new ball tomorrow if Australia won the toss. If Australia bowls tomorrow first. So how do you see Australian bowling versus Indian batting? Because the last test match, last day, which India and Australia played in Australian soil, Rishabh Pant hammered your bowling. Literally, Rishabh Pant hammered your bowling. He take it Yeah. to the cleaners. You remember in Brisbane. Yeah, of course I remember that. Yeah, everyone So remembers it. how do you see this batting lineup, Indian batting lineup, competing against the fiery Australian bowling? And if you see the stats of Australian bowlers at Perth, absolutely phenomenal. Average of under 18. Pat Cummins has 18. Lyon has 27 wickets with an average of 18, 5 wicket hauls. Josh Hazelwood Yeah. has some great numbers. Stark has some great numbers at Perth. So how do you see the Australian bowling in the whole series as well and in the upcoming test as well? Well, I'd say, India, it looks like it's going to be a pretty attacking batting lineup. Touched on no Pujara, no Rahane. Um, Pujara, honestly, I think we're already 1-0 up because you guys don't have Pujara. He was so good. He was so good. Not having Pujara just gives us an edge immediately because he was a rock and he loved it out here. Big I've got statement. quote, I've got a quote here from what is it, the Hoff, Josh Hazelwood. I'm glad Pujara isn't here. He's someone who spends a lot of time at the crease and tires the bowlers. He said that. So without him, what have you got? You're going to have Yashasvi Jaiswal. I don't know who your other opener will be yet. You're going to have Kohli. He's pretty aggressive. All in all, Sarfraz Khan aggressive. Rishabh Pant aggressive. Dhruv Jurel, he might just play as a batter. Maybe I'm thinking. He's pretty aggressive as well. He can knuckle it down, but I've seen him pretty aggressive. I think all Australia needs to do with their bowling is just suffocate them in the field. Don't let them get easy runs. Don't let them get easy boundaries. Even if they do what they did in England and start with a deep point, so they can't cut you for 4. They can only cut you for 1. I think they can't let the Indian batters get away. And Cummins, he's learnt how to do that. You look at the final a year and 2 days ago, to be exact. Exactly. India didn't score a boundary for 30 odd overs. Just suffocated in the field. Everyone's got to be top notch. You're going to have Hazelwood hitting a mark about this big on the pitch all day. Stark, if he gets the new ball, Star he'll try and roughing the move it. pitch for the line. And Lyon, he's not got very. Look at his compare Lyon and Ashwin, for example. Lyon's looks the same every ball, moving in. He might have the one that goes straight, natural deviation, has the one that turns a bit more or bounces a bit more. But it all looks the same. He doesn't have the Karam ball. He doesn't have this new one that Ashwin's developed that he kind of puts through like pretty much a slow in swinger. I think he's the best finger spinner ever. And all they've got to do, I think, is just suffocate India, make India think we've got to score. If they're scoring at 1.5, 2 and over, there's going to be someone who runs down the wicket and tries to send it into row Z. Right, so there comes Yashasvi. Sorry to interrupt you. So there come Yashasvi Jaiswal and Rishabh Pant, who plays aggressively and who scores against the opposition with a good run rate. That's why Yashasvi Jaiswal is on a hype. Yashasvi Jaiswal, the new king, the newspaper I've also seen. So how do you see Yashasvi Jaiswal and Rishabh Pant? Because they will go, taking line to the cleaners. They can use their feet. They can go down the ground. They can play that sweeps. If they attack line and then they Pat Cummins and Hazelwood gets wavered, which we have seen in the last tour. So there is a much possibility that India can put a good score. Yashasvi Jaiswal and Rishabh Pant, I think these two guys and Dhruv Jurel against spin as well. These three can be the ones who can have some smashes tonight. Yeah, they can. But I look at, say, when we went to England, Harry Brook, incredible player of spin. Obviously, the last 2 tests in Pakistan where they had it moving literal meters off the pitch doesn't really show it. But he's a great player of spin. He can pick a wrong and he can pick,
he was too aggressive. You know, if you get too aggressive against Nathan Lyon, he'll get you out because he'll bowl the same ball, but this much shorter, and you'll mistime it. You'll edge it. Will go through you. I they may try and take Lyon, you know, to the cleaners. We've got Travis Head as a part-time offie. He's pretty good. We've got Nathan McSweeney as a part-time offie. Pretty good from what I've seen. He just takes a wicket in every 3 or 4 overs he bowls, and he just comes on 3 or 4 overs, takes a wicket, goes off. I don't think Nathan Lyon. I think the key to it is just stopping the boundaries. Which you look at the boundaries in India, you look at the boundaries in Australia. It's completely different. They're huge. You know, they play on AFL fields here. They don't. It's not just a cricket field. They play on AFL fields. Your boundaries are 70+ meters when you play on the centre. On the I'm centre sorry, strip. I'm sorry, Amaan. I'm sorry. This is Australian mentality. Don't be triggered. You like, you know, the way I look at Right, it. right. One thing I want to add: you Australians always give bold statements and then you overturn it. Don't give much of a statements. If India does 4-1, 3-2, then don't be embarrassed and don't be. No, I see. The thing is, I'm going to give it because I can take the criticism. I don't care. You know, if I'm wrong, I don't care. But I'm confident that Australia, you know, there is no way they're going to go into this with a poor defensive. India have got the wood over us. They're going to come into this and go, we're the world champions. We're going to win. That's how they go into it. They won't think of anything else. They'll have their game plans to the batters or the bowlers, but they're going to go in and go, summer of cricket, 5 tests. Let's win all 5 convincingly. They're not going to think too much about it, I don't think. And they're just going to come in. They're going to hit their marks. Cummins will be line and length. Hazelwood will be line and length. Lyon will probe away, and Stark will be the enforcer. And I don't think because the Perth curator or the Optus Stadium curator has promised a lot of bounce, a lot of pace, bit of green. It's going to be hot. You know, it's going to be low to mid 30s. It's not going to crack. Yeah, I just want to know about everything about Perth. Everything about the Perth conditions. Can you sum up for us? Yeah. Well, I can. it was a little rainy today, from what I saw. Possibly like slight rain today. Little bit humid, but you've got absolutely nothing. Like tomorrow, it's going to be 22 degrees in Perth, and then it's just going to bake. It's going to be 28, 31, 28, 28. Like it's not a typical furnace that you might get, you know, that you used to get at the Wacker. But big stadium, it's going to be a quick pitch. It's not going to crack apart and become impossible to play on. It's going to be one Ryan, of those. I have shared something. The Perth record. Can you say it? Yeah. Hold on, let me just make it a bit bigger. I don't know. Okay. I just zoom in. There are four matches played by Australia in this stadium, and they have won all 4 of them. Yeah. How do you see Perth as a venue for Australia? I see it. You know, it looks like a mini MCG with the dimensions and all that, I'd say. And the deck is like the Wacker, and we had a great record at the Wacker, Australia. You know, the bouncing pitch, the quick pitch. Good, mate. They love to bat. Yeah, all good. I can see it, mate. Thank you. So look, bowling average, on average, you're making 300. We score the centuries. I think Craig Brathwaite scored one there. That's one of those opposition ones. Virat Kohli also scored a century. 2 opponent century. There is one Virat Kohli. That is favorite test innings. In the first game. Yeah. In the first series, like 2018 or something. I'm pretty sure that one was. But it's a deck that the Australian batters seem to like because it's quick, it's fast, you can trust the bounce. It's not gonna, you know, you're not gonna have one that pops up at your shoulder and the next one that hits your ankle, landing in pretty much the same spot. You can trust the bounce, you can trust the pace. It's going to carry through to the keeper. You know, you'll probably get a few buys or a few top edges going for 4 or 6. Just that's what happens in Perth because they've tried to because it's a drop in deck, but they grow it like they used to with the Wacker pitches. And remember how they used to just fly off when they played there. So I think, you know, the records feature itself, 4-0,
500s compared to 2 for the opposition. One of them was Coley, one of them was Craig Brathwaite on an absolute road. And Martinez has some great records in Perth. He is absolutely Yeah, he phenomenal. does. He does. I think, was it he and Smith scored double centuries against the West Indies 2 series ago, or 2 or 3 summers ago. It's a place where you go, Australia should be winning, essentially. It's, Yes, Australia know, should win there because this is a ground which is the toughest ground for India in this series, and India is low of confidence as well. Along with Australia has also played a trick. Whenever we see BGT, it starts from Adelaide, it starts from we can say Brisbane and etc. But this time Australia has played the cards. They have started the series from Perth. So it's yeah. also a tactical move from Australia. अमान मैं आपके पास आना चाहूँगा पर्थ तो बहुत मुश्किल कंडीशंस इंडिया के लिए सबको पता है किसी भी एशियन टीम के लिए बहुत मुश्किल कंडीशंस होती है अब पर्थ में कल जब इंडिया की बैटिंग आ जाती है टॉस जीत के ये जो जिस तरह के आपने भयंकर स्टैग्स देखे हैं ऑस्ट्रेलिया के इंडिया के बैटर्स की तो मैंने बात की ही की है लेकिन यहाँ पे गुड भी बहुत पड़ती है बहुत फेंटा पड़ा है जो एशियन टीम्स ने विजिट की है अब इंडिया की बॉलिंग क्या उस तरह प्रोवाइड कर पाएगी जो आप चीज के कहते हैं सोच रहे हैं ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग ने जो करना है 4 मैचेस 4 विन्स ऑस्ट्रेलिया के नाम एक और हिस्ट्री बनाने का मौका है पर्थ में हाउ डू यू सी अमान क्योंकि पेस पे अगर हम इनकी एवरेज देखें ऑस्ट्रेलिया की सो काफी अच्छी है स्पिन में भी काफी अच्छी है और 500 इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के टीम्स ने बनाई है 4 मैचों में डोमिनेंस हमें नजर आती है क्योंकि लास्ट टाइम जब पर्थ हम भी ट्रैवल किए थे वी गॉट अ लॉट ऑफ हैमरिंग मिचेल मार्श हैमर्ड अस एट पर्थ डेविड वार्नर हैमर्ड अस आई रिमेंबर लास्ट ईयर एंड वी लॉस्ट अराउंड अबाउट 300 runs in an innings is that right mate 300 runs was a rough target we lost the Perth test last year. Yeah. So Amaan, क्या कहते हो आप? 360 runs it was. Yeah, 360 runs. India's bowling at Perth, Optus. अब इंडिया की बॉलिंग की देखिए बात करें जसप्रीत बुमराह मेरे को लगता है जो बॉलिंग खेलने वाली प्रोबेबली जसप्रीत बुमराह मोहम्मद सिराज हर्षित राणा प्रोबेबली अपना डेब्यू करेंगे एंड रविचंद्रन अश्विन एंड नीतीश कुमार रेड्डी जैसे कि आपने बोला ऑफ कोर्स कि यार ये पिच आसान नहीं होती क्या कहते हैं जो अपोनेंट टीम के बॉलर्स आते हैं उनके लिए क्योंकि दिक्कत क्या होती है पिच तो वो सबके लिए सेम ही है ऑफ कोर्स प्रॉब्लम क्या है ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स को आइडिया है कहाँ टप्पा फेंकना है कहाँ से विकेट निकालनी है अब जो न्यू बॉलर्स आते हैं खासकर पहले टेस्ट मैच है हो सकता है हमारे बॉलर्स पहली इनिंग में ढूंढते रहे हैं टप्पा और ऑस्ट्रेलिया और वहीं पर ही टेस्ट मैच खत्म हो जाए ये प्रॉब्लम मुझे लगती है ऐसा हो जाए बट जैसे कि बुमराह से मुझे उम्मीद है जसप्रीत बुमराह तो मुझे पता है अच्छा करेंगे इसमें शायद किसी को ऑस्ट्रेलियंस को भी पता है बात आपको भी पता है सबको पता है दिक्कत कहाँ आती है कि मोहम्मद शमी का मिस होना मोहम्मद शमी बहुत इंपॉर्टेंट फिगर थे इस टीम के लिए अगर बुमराह और शमी एक तरफ अगर टेंडन में बॉलिंग करें तो वो इतना आसान ईजी नहीं होता ऑस्ट्रेलियन बैटर्स के लिए लेकिन यहाँ पे क्या है मोहम्मद सिराज आउट ऑफ फॉर्म है बहुत टाइम से टोटली आउट ऑफ फॉर्म विकेट्स ही नहीं मिले उनको बिल्कुल ही हर्षित राणा सब लोग तारीफ तो बहुत करते हैं बॉलर की लंबा है हाइट में बाउंस अच्छी फेंकता है हिट द डेक बॉलर है बट सिंपल सी बात है यार हिट द डेक विकेट मिलते हैं ऑस्ट्रेलिया में बट हिट द डेक के साथ आपको थोड़ा आगे ही बॉल डालना पड़ता है हर्षित राणा का वो टप्पा ढूंढना पड़ेगा आकाशदीप जैसे बॉलर्स हो गए प्रसिद्ध कृष्णा हो गए तो मैं वही बोलूंगा इंडियन बॉलर्स के लिए एक टेस्ट तो ऑफकोर्स होगा लेकिन टेस्ट ना जैसे कि इस पे मेरे रायन से एक क्वेश्चन है आप जरा इनसे पूछिए जैसे कि हम सब बात कर रहे हैं कि इंडिया की बैटिंग कमजोर है ऑफकोर्स इंडिया की तो वीक बैटिंग है ही है अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग में थोड़ा नजर डालें तो मैं अगर आपको थोड़ा सा ऑस्ट्रेलियन स्टेट्स तो नहीं बताऊंगा मैं आपको बताता हूँ कैसे जैसे कि चलिए उस्मान ख्वाजा ने बहुत रन बनाए उस्मान ख्वाजा इज अ बैट्समैन जिसका मैं मानता हूँ जिससे खतरा है इंडियन टीम को ऑफकोर्स बैट्समैन सबसे खतरा है बट उस्मान ख्वाजा एक ऐसा बैट्समैन है रन बनाए काफी नेथन मैक्सवेनी टॉप प्लेयर भाई 25 उसकी एज है सिर्फ प्लेयर बहुत तगड़ा है बट आप सोचो पर्थ में ऑन अ ग्रीन ट्रैक मतलब ग्रीन ऑफकोर्स इतना कुछ ग्रीन ट्रैक नहीं होगा बट जसप्रीत बुमराह के आगे इतना इजी नहीं होगा उस बैट्समैन के लिए ठीक 25 साल का अच्छा प्लेयर है मैंने उसको शेफील्ड में बैठ के देखते हुए खेलते देखा है बिग बैश में खेलते हुए देखा है प्लेयर टॉप क्वालिटी लगता है मेरे को लेकिन उसके लिए भी इजी नहीं होगा मानोस लबुशेन की हम बात करें कितने रन बनाया लबुशेन तो अपने मतलब वो बैट्समैन लगे ही नहीं है ना जो 2 years पहले थे लबुशेन आउट ऑफ फॉर्म भाई काफी टाइम से मतलब
आउट ऑफ फॉर्म नहीं बोलूंगा, बट 30, 40, 30, 40 रन ही उनके बने हैं, उससे ज्यादा उन्होंने भी नहीं बनाए। स्टीव स्मिथ, मैं कहीं पढ़ रहा था 508 दिन से सेंचुरी नहीं है स्टीव स्मिथ की, जितना मुझे आइडिया है। मैं स्टीव स्मिथ देखो गोट प्लेयर है भाई, ही इज अ गॉड लेवल बैट्समैन टेस्ट क्रिकेट, बट दिक्कत क्या है स्टीव स्मिथ के साथ कि उनका भी यही हो रहा है, एक अच्छा कवर ड्राइव, अच्छा पुल शॉट, एक अच्छा स्ट्रेट ड्राइव, फिर कहीं ना कहीं 30, 40 में स्टीव स्मिथ भी आउट हो रहे हैं। ट्रेविस हेड का एक ऐसा बैट्समैन है, मतलब उसके बाद वो एबिलिटी उस बंदे के पास, ऑस्ट्रेलियन बैटर के पास, ट्रेविस हेड के पास के उस बंदे पे ये चीज है कि शायद अगर 10 पे 3 आउट होंगे तो वो किसी दिन आके 80 में 100 भी मार दे, लेकिन किसी दिन वो 11 पे 4 भी हो सकते हैं। ट्रेविस हेड के साथ ये सीन है। और फिर अब बात करें कैमरन ग्रीन, बहुत इंपॉर्टेंट बैट्समैन था इनका, बट वो है नहीं। हाँ, उसकी जगह मिचेल मार्श खेलेगा। तो वही मैं कह रहा हूँ ना कि मिचेल मार्श ने ऑफकोर्स इंग्लैंड में अच्छी एशेज में अच्छी बैटिंग दी थी, सेंचुरी मारी थी उसने आई गेस, लीड्स में आई थिंक उसने सेंचुरी मारी थी, बट उसके लिए इतना इजी नहीं होने वाला भाई। और एलेक्स कैरिगन का बैट्समैन जो मुझे लगता है अच्छा प्लेयर है, जिसने रन बनाया है, जो हमेशा इंपॉर्टेंट रन बनाता है। तो सब लोग, मैं वही रायन से मेरा आपके क्वेश्चन पूछिए कि आप ये इंडिया सम अप करना चाहते हो अमान के हाँ, ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग भी उस तरह के कहते हैं नहीं है उसने रन कि बनाया ठीक है, डोमिनेंस नहीं है, हाँ। लेकिन राइन ही स्मिथ का हैज अ बैटिंग बनाया। क्वेश्चन। ओके, Yeah. ठीक है, थैंक यू। राइन ही हैज अ क्वेश्चन, अमान हैज अ क्वेश्चन। ही इज सेइंग Yeah. दैट इंडियन बैटिंग हैज बीन a lot of talks that they have been in a slum. They didn't play good against Spain. KL Rahul is on a liability. Virat Kohli is not in good form. Yashasvi Jaiswal has the biggest test of his life, cricketing career. Rishabh Pant, they are dependent on only Pant. But he has a valid question that Australian batting is also, I think, overhyped because no runs from Usman Khwaja, no runs from Nathan McSweeney. Yes, he has a good average of उस्मान 34, ख्वाजा के रन 35. नहीं, उस्मान ख्वाजा Yeah, के रन है, बट बाकी के अलग sorry, नहीं है। sorry. हाँ। Usman Khwaja has the runs. Nathan McSweeney has an average of 35, 36. Steve Smith is also in a test slump. Marnus Labuschagne, we see in and out he scores. Alex Carey is a good batsman. Travis Head, against India, he is a different beast, but against other opponents, we can say he's not been quite good. So Australian batting is a real worry, and he's saying that this bowling can also cause worries for Australia. So how do you see Australian batting? Because Australian batting is not a lot in talk, but I think they are on balance. They are on the same stage. They are on the same positions. Australian batting and Indian batting. Both are on the I weaker team. so I definitely get what you mean. I think Australia's batting, it's not been incredible. I don't think we scored a century last summer. I don't think we did. Smith got close with a 90 odd not out against the West Indies, but I had scored one against the West Indies in Adelaide. But our batting hasn't been incredible. It's true. Uzi Kawaja, he hasn't scored 100 since the first test in England in 2023. We actually haven't played that much test cricket. We played those 5 against England. We played 5 in the summer. We played 2 against New Zealand. And then we've had like a gap of 7 or 8 months since we played test match cricket. It's Marnus has been in okay form in Shield and in county cricket. Smith, he hasn't actually been that good. He played 1 Sheffield Shield game, scored 3, and then got a duck in the second innings. Kawaja's been good. McSweeney's been good. Like, these are people who are in the runs domestically. Mitch Marsh, he was great last summer. He was arguably our best player last summer, I think. Carey's been in the runs. I don't think our batting has performed as well as it should be, as well as it should. As I mentioned earlier, down to the decks, I do think that's a big thing as well. I think the batting, though, it feels more solid than India's in the sense that, especially this test, no Rohit Sharma, no Shubman Gill. They're 2 huge losses, I think. Rohit Sharma, he's a bit hit and miss. I've seen way too much criticism for the guy. You know, he cops it on the internet. I've seen he cops it. He's a great player. He averages Great 40 leader, odd. great captain, Great. wonderful He's leader. a great player. Obviously, the 3-0 slip up against New Zealand. I'm not going to let anyone forget that for a long time because it's funny to talk about. But I don't think that's a reflection of the Indian squad. You've got
like Sarfaraz Khan, he hasn't played too much Test cricket. Virat Kohli, I've got the actual numbers of his Test match, of his Test averages over the last few years. 2020, 19. 2021, he averaged 28. 2022, he averaged 26. 2023, averaged 56. So that's the outlier. And this year is averaging 22. Like, you know, those averages get you dropped from your second 11 at club cricket. Like, And it's not been incredible. yeah, It's there is an not been also fun incredible. fact. Also, fun fact: he scored around about 20 centuries from 2017 to 2020, and then he It's scored too soon for 2020. somebody. Yes, He scored 2022 to two since, 24. yeah. He just he just had He's scored. he's not been incredible. But And then again, India, that too also not on difficult conditions. Once against weaker West Indies, and once again the flattest pitches of all time, Ahmedabad against Australia. yeah. Sorry, Aman, Um, I am the die-hardest fan of Virat Kohli. I am. You are saying absolutely right. I think, of course, I of course, think this is a the form is fact not there for them. because if you like someone, if Virat Kohli is my idol, I don't Yes, yes. want to be a hypocrite to defend him when he is not doing good. If he is not good, I will be presenting my facts because it is my job. Virat Kohli literally Of hasn't course. been good, but the Australians are literally. I am coming to Virat Kohli now. There has been 56 minutes talk and we haven't talked on Virat Kohli. What are you guys doing, man? Virat Kohli because we on don't need Australian to. He should newspapers. be dropped. He's not playing well enough. He should not be in that Indian team. Right, On form, he should not be in that right, Indian team. right. Wait a minute. Your Australian media, your whole country is I hyping like Virat Virat Kohli. Kohli. I like him. He should not be in that team. On form, he Uh, should not be in that just team. How many players can average 20 odd over 5 years the band and shape, the still be star, the first name on the team sheet? the name Virat Kohli has, the Stupid. icon Virat Kohli is for world cricket. Yes, is there is in Australian cricket. So Steve Smith should also be dropped. He is also in a slump. He's not been good. There are Not more that bad, shuffle but not changes. that bad. Virat has been just awful Yeah, in last 2 years. I just have a point. I just have a point with both of you guys. Aman will relate. Aman, I really respect Sachin Tendulkar. I still believe he's one of the greatest cricketer. One of not, he is the greatest cricketer ever to hold the bat for Asia. In Asian conditions, he will be always the greatest cricketer ever to play cricket. Even Virat scored 100 centuries or 102. He surpassed that record. But Virat Kohli brand, Virat Kohli starship, and the amount of audience Virat Kohli gauge from cricketing arena. I haven't seen Sachin going to Australia and their newspaper front page comes. The king is back. The king has landed in Perth. This kind of respect, this kind of, we can say, a huge hype. I haven't seen any cricketer. I haven't seen any cricketer in the world that is getting a lot of hype in Australia. So Virat Kohli has something to fill in because it's the last series for both Virat and Smith against each side, most probably. How do you see Virat Kohli, Aman? Oh, Ryan, how do you see Virat Kohli and Aman? How do you see Steve Smith? ये दोनों Like, जिनकी एक बहुत बड़ी लेगेसी है. How do you see the legacy should be ended and how it will be, how it is going to be ended? so Virat Kohli, best all format player ever with the bat. I can say that with confidence. But I think it's kind of getting to that stage in Test match cricket, especially. It's kind of like Ricky Ponting in his last few years in Test match cricket. Went on for too long. Virat Kohli, you know, I'm saying all this. He'll probably score 500 runs this series now. I've said this. Good on him, you know. But it seems it's getting to the stage where he just can't bat. He can't handle the test match arena anymore. It seems like that, you know. It's Virat Kohli. He's usually pretty cool under pressure. He's shown many a times that, you know, the media gets at him and he
he loves the criticism. You know, it seems like that. He loves the criticism because he goes out and scores runs. Fiery But correct. recently, but recently it hasn't been that way, and I do think a lot of it. I do think there's too much on Virat Kohli in this Indian squad, like too much focus on him, because this Indian squad, take out Virat Kohli, it's still an pretty good squad. You know, if everyone's fit, take out Virat Kohli, they've still got arguably a top 2 team in the world. It's You also know, Ryan. You also know, Ryan, what kind of character and what kind of stats Virat Kohli has in Australia. In Australia, he loves the bounce. He loves the pace. Yeah, There he will be does. He no does. spin. If if Pat Cummins is a good strategician, so the matchup of Cummins versus Kohli, no, not much hype. I want the matchup from Cummins' mind is Lyon and Kohli. Nathan Lyon will be the one who will be troubling Kohli in this series, and no one is talking I think about it'll be this matchup. Hazelwood. It'll be I Hazelwood. think It'll just keep. I think it will be Nathan Lyon versus Kohli. I think looking at the recent struggle against Spain by Kohli. Yeah, I don't know. Hazelwood just seems to have his number. He always seems to put it in the right area, in that, you know, that awkward 6 to 8 meter area, nipping away, where you have to play at it. And Coley, from what I see, he goes at the ball hard. He goes at the ball with hard hands. With the carry in Australia, it's always gonna make it to the keeper. First slip, second slip, whatever. I think if he wants to make runs, he needs to leave the ball, and And one only thing play the more, runs right? that One matter. thing more. It will be a quite of time this time that Virat Kohli will not be leading the side in Australia. Mm. You Yeah, you know when Dhoni was captaining, he retired after that Sydney or I don't know the Brisbane or Sydney test when Dhoni retired, and then Kohli took over the captaincy, and in the last match he rushed for the chase. So Virat Kohli has an aura. Virat Kohli has a huge amount of respect in Australia, and if we see he does. Virat Yeah, Kohli playing as a player, and now Virat Kohli is not like we have seen him in the past. Not much of aggression, not much of fire. This time Virat Kohli will be playing as a player. There will be no pressure on him. But the recent struggles and the recent criticism of that London India media is reporting London India, that shifting to London and coming back, no, not playing a that's good fine. innings and not spending quite time on the pitch. So this time, Virat Kohli will be playing as a player, but as Jasprit Bumrah said today, even Virat Kohli is not the captain, but he is our leader. He will be leading this Indian side in this 5 Test match series. How do you see That's the Virat wrong thing to leadership say in as a this series? captain. You can't be saying that as a captain. You cannot be captain of India and say, "I'm captain, but Virat Kohli is the leader." You can't say that. Let Virat do I Virat know, things. I know. Rather than- In Australia, this kind of things works because in Australia you don't see as a seniority thing. When Tim Payne captained, he didn't see any kind of Warner Smith anything. But in India, if you are playing under Virat Kohli and you are captaining Virat Kohli, the seniority role, Amaan, you will be relating with me. जो seniority का role होता है ना, वो जो एक हमारे इंडिया पाकिस्तान में है, जैसे सीनियोरिटी आपका वो सीनियर है सचिन पाजी है और उसकी आप कप्तानी कर रहे हो, आप वो चीज कर ही नहीं पाते जो कि कहते हैं आप एज अ कैप्टन कर पाते। मतलब अभी आप बना दो कप्तान यशस्वी जायसवाल को, आप यशस्वी जायसवाल को खुद थिंक्स करते हुए नहीं देखोगे। यू विल बी सीइंग जो यशस्वी जायसवाल के कहते हैं आसपास से कर रहे हैं। सो राइट सम अप ऑन विराट कोहली, हाउ डू यू सी एंड प्रिडिक्ट अ नंबर 5 Test matches, how many hundreds and how many runs from the king of the cricket, the undisputed king of the cricket, Virat Kohli. All right. I've got 2 answers for this. On form, nothing. Maybe 150. Like 150. Like one half century. But knowing I've said this, knowing it's Virat Kohli, he'll probably come out. I think he might score 100 this test. It'll be a good batting deck. He'll score 100 this test, get the fanfare. He might score 1 or 2 50s. I don't think he'll have a huge series. He'll score 100 and maybe 250s. I think. But I don't think he'll be India's game changer. I think India's game changer will be Bumrah, because Australia just still can't play him. Obviously, And obviously. or Rishabh Pant. Yeah,
he is. If you asked any Australian cricket fan, if you said pick a cricketer that is an Australian, who's your favourite? 99% of them will say Rishabh Pant because he's funny, he's Rishabh, good, great, he brings something else to the game. I think Virat Kohli, his legacy could be tarnished this series. I think if he has a stinker of a series, it comes down to I you know don't if agree. he's the I only don't one agree, Ryan. I think he has proved in enough. test match cricket in test match cricket he will be remembered as the guy who should have retired 5 years ago. He and just continued with his white ball No, stuff. this No, is he's not so going to. harsh. This is so harsh, Ryan. This is so harsh. I like that. No, I know it's harsh, Nah, nah, but nah, this is I know it's harsh. I know it's harsh. I know it's harsh. But if he averages 20 this series, which is possible because he's averaged yes. 22 There this is there year, is a talk on. There is a talk. his Obviously, yeah. Ryan, there because is a talk. because it gets down to Australia is one of except for on when the Pakistani pitches are highways. Australia is probably one of the easiest places to bat in the world with the bounce, with the pace, with being Exactly. pretty up and down. If he doesn't do well this series, and it's been built up around him for some reason. It should be built up around the rest of the Indian squad, I think, because you look at all the star performers. Kohli hasn't been one of them. He will do well. Now I've said this because I just have this knack of jinxing things, but his legacy as a Test match cricketer, you're only as good as your last game in Test match cricket. It seems like you're only as good as what you remember for. Like, and people aren't going to remember his 100 odd on the flattest deck on earth in Ahmedabad. People are going to remember him for the biggest Test series ever, essentially, and making no runs, or they'll remember him for the biggest Test series ever and scoring 3 or 4 centuries. I think this series could define his overall Test match legacy. Because if he shows, it was a slump, the early 2020s, that was a slump, and he comes back, scores tons, goes on for another few years, and just continues on, gets, pushes 35, 36, 37 Test match hundreds. The whole thing of him will change. He's got 50 ODI tons. If he gets to 30 odd, close to 40 Test match tons, it could be that. If this series he doesn't do well, I think he should just call it quits, because otherwise, India, in my opinion, would be forced to drop him, because you cannot continue playing Test match cricket like that. And I hope Australia annihilate India, but I hope for Virat's sake he gets it back, because he's a character. He's a bums on seats character. If you want to save Test match cricket, you need to have those kind of people playing. You need to have the people that you go, sorry, Virat's batting, I've got to put the TV on. But if he doesn't do well, it's just going to be yet another disappointment from Virat Kohli, and it has to stop at some stage. And that's either There getting is back a into there is a big statement by Ryan. He thinks that this series, Virat Kohli's Test legacy is on the line. If I sum up. Yeah, it is. Okay, Ryan. Big comments. Let's see. Virat Kohli has always faced criticism since he holded the bat for the first time, and I still believe he will be smashing some 550 or 600 runs to Australian faces, and he will be smashing some centuries in the mouth of Australian fans. If he does it, fair play to him. Fair play to him if he does it. But he's not showing enough. Now this is a missing straight ones. Yes, I want him to do, because if I see Lionel Messi as my football idol, I see Virat Kohli as my cricket idol. This is what it is. The love Virat Kohli I have in my heart, I can't describe. When he won the World Cup, literally I was from Pakistan. My team got humiliated against USA, lost to an 18th ranked team. But when Virat Kohli won the World Cup, I literally got emotional. And I am also giving a prediction that he will be smashing some 550 or 600 runs to some Australian toxic fans who wants him not to score runs. Sorry, mate. This is Australian harsh. fans want these tests to go for 5 days because we are lazy as hell and we want to sit in front of TV for 5 days. So if Virat scores runs, cool. I still want us to win. But from what I'm seeing, when he scores runs, when he scores runs, India wins. Obviously, there is no point of debating. When he scores, India wins.
सो कमिंग टू अमान, अमान अच्छा यार विराट कोहली पे तो इन्होंने काफी हार्श कमेंट्स दिए। अब आप स्टीव स्मिथ पे क्या कहना चाहेंगे? स्टीव स्मिथ को तो काफी टाइम से आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, रवि शास्त्री ने भी कमेंट दिया कि ही इज द वन बैटर दैट आई एम लुकिंग फॉर। रवि शास्त्री, हर्षा भोगले, हर कोई इंडियन मीडिया से या इंडियन कंटिजेंट जो उधर गया हुआ कमेंटेटर सब वो यही कह रहा है कि हम स्टीव स्मिथ को देख रहे हैं, स्टीव स्मिथ का कमबैक है, उसकी लास्ट प्रोबेबली टेस्ट सीरीज है, और वो जिस तरह अच्छे निक में भी हमें नजर आया पाकिस्तान की सीरीज में। हाउ डू यू सी स्टीव स्मिथ? स्टीव स्मिथ जैसे रायन ने बोला विराट कोहली के लिए, मुझे लगता है स्टीव स्मिथ की भी थोड़ी आउट ऑफ फॉर्म तो रहे हैं। देखो सबको पता है 508 दिन से जो स्टैट है वो सेंचुरी नहीं है उनकी, वो एक थोड़ा सा ऑस्ट्रेलिया के लिए चिंता वाली बात तो है ही। लेकिन मैं ये मानता हूँ, मेरा एक सोच है, मेरे लिए तो स्टीव स्मिथ इज द ग्रेटेस्ट बैट्समैन ऑफ दिस टेस्ट बैट्समैन ऑफ दिस जनरेशन। फॉर मी स्टीव स्मिथ इज ओके, बट उसके रन नहीं है, उसकी एवरेज एक टाइम पे 60 के पार थी, अब नहीं है जो कि है ना, अब वो गिर के 56 के अराउंड आ गई, आई गेस काफी कम हो गई है कुछ टाइम से। तो मेरा ये है कि जब 5 टेस्ट मैच की सीरीज होती है, 5 टेस्ट मैच की सीरीज है, ग्रेट प्लेयर्स लाइक विराट एंड स्टीव स्मिथ, मतलब दे विल फाइंड अ वे टू स्कोर रन्स, आई थिंक इन माय ओपिनियन दे विल समहाउ फाइंड द वे टू स्कोर रन समवेयर डाउन द लाइन। ओके, मेरे को ये लगता है कि देखो 2 टेस्ट मैच शायद हो सकता है दोनों के रन्स ना बने, बट स्टीव स्मिथ की अगर मैं बात करूं, विराट को अगर मैं हटाऊं इनसे, सिर्फ स्मिथ की बात करूं, यार इतना महान खिलाड़ी है, इतने रन्स बनाए हैं, 9000 प्लस टेस्ट रन है उसके स्टीव स्मिथ के। हम्म, और उसका 60 का ऑलमोस्ट एवरेज है। अब उस लेवल का बैट्समैन भाई, मुझे लगता है देखो शायद हो सकता है वो पर्थ में रन ना बनाए, मे बी एडिलेड में फ्लॉप हो जाए, बट मैं मुझे लगता है ब्रिस्बेन आते आते भाई वो समझेगा ना, इंडियन बॉलर्स को डिफरेंट तो है नहीं, 4-5 वही फास्ट बॉलर्स हमारे पास, वही बॉलिंग कर रहे हैं, सेम विद विराट कोहली भाई, वो ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स हैं, तो मुझे लगता है कि इस क्वालिटी का जो बैट्समैन होता है, मैं मानता हूँ फॉर्म से आउट ऑफ फॉर्म गुजर रहा है, रन नहीं बन रहे हैं, सब ठीक कुछ सही है, बट स्टीव स्मिथ मुझे लगता है समहाउ फॉर्म पकड़ लेगा भाई सीरीज के अंदर। 5 टेस्ट मैच है ना, 5 टेस्ट मैच बहुत, 3 छोटे होते हैं, बट 5 तो काफी सारे होते हैं टेस्ट मैचेस, 5 टेस्ट मैच है, और मेरे को लगता है स्टीव स्मिथ की अगर मैं बोलूं, उसके भी रन नहीं है ऑफ कोर्स, और रायन तो काफी हार्श लड़ रहे हैं विराट कोहली के लिए, मुझे लगता है कि उनको शायद ड्रॉप कर देना चाहिए। देखिए वो बात तो अलग है सारी, ड्रॉप मुझे लगता है दोनों में से कोई ड्रॉप नहीं होगा, दोनों खराब परफॉर्मेंस करते हैं, किसी के साथ ऐसा कुछ ड्रॉप वाला सीन नहीं होने वाला, बट स्मिथ के लिए मुझे लगता है कि 2 सेंचुरी स्मिथ मिनिमम बनाएगा, मिनिमम 2 सेंचुरीज स्टीव स्मिथ, एंड मैक्सिमम भाई, मैक्सिमम तो कोई लिमिट ही नहीं है स्टीव स्मिथ की, वी ऑल नो भाई, 4 सेंचुरी बना दे वो, 5 बना दे, उसका उसका उसको कुछ नहीं पता, वही वाली बात है ना, फॉर्म इज टेम्पररी, क्लास इज परमानेंट, स्मिथ एंड विराट दोनों के साथ मैं ये चीज जोड़ता हूँ, सिंपल सी बात है। एंड इतने रन बनाए हैं, दुनिया भर में रन बनाए हैं भाई स्टीव स्मिथ, वही स्टीव स्मिथ है ना जो 2019 में जब कमबैक करा 2 साल बाद, तो ऐसे बैटिंग कर रहा था एशेज में जैसे कि मतलब भाई कोई आउट ही नहीं कर सकता उसको दुनिया में, मैंने वैसी बैटिंग नहीं देखी मेरी लाइफ में टेस्ट क्रिकेट में, किसी को जिंदगी में बैट करते नहीं देखा जो स्मिथ ने इंग्लैंड के साथ किया था एशेज 2019 में। उसने जो बैटिंग करी थी, कुछ 700 रन बनाए थे उसने 5 टेस्ट मैच, वो भी उसमें एक इनिंग कम, 4 में एक इनिंग कम खेली थी उसने, वो 3.5 टेस्ट मैच के अंदर 700 प्लस रन बनाए थे। तो स्टीव स्मिथ का भरोसा नहीं भाई, वो कब कौन सी फॉर्म पकड़ ले, जैसे कि स्मिथ स्मिथ तो फॉर्म में दो कुछ टाइम से है ही नहीं। आप WT फाइनल की बात करें 2023 में, हर कोई बात कर रहा है स्मिथ फॉर्म में नहीं है, स्मिथ फॉर्म में नहीं है, हमारे यहाँ तो जब भी यही बात हो रही थी कि स्मिथ के रन नहीं बने, इस फलाना ढिमकाना सब बातें हो रही थी, लेकिन उसने फाइनल में सेंचुरी मार दी ओवल के अंदर। तो मुझे लगता है ऐसे जो बड़े प्लेयर होते हैं, समवन लाइक स्टीव स्मिथ भाई, वो बड़े मौकों पे रन बनाने स्टार्ट कर देते हैं, फॉर्म ढूंढ लेते हैं। तो मुझे तो ये लगता है भाई स्टीव स्मिथ का, मुझे लगता है आउट परफॉर्म भी है तो भी मिनिमम स्टीव स्मिथ 400 रन इस सीरीज के अंदर बनाएगा, मिनिमम 400 रन बनाएगा भाई, इस लेवल का वो प्लेयर है। और बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है यार उसके लिए, यार 2 बार ऑस्ट्रेलिया हार गई है हमसे, तो स्टीव स्मिथ को पता है उसकी लेगेसी, मतलब एक बार चलो वो नहीं था, बट अब वो पिछली बार था तो वो हार गए, उसके शायद सिडनी में सेंचुरी आई थी उसकी, जब तक मुझे याद है। ऑब्वियसली उसको स्ट्रगल होगा बुमराह के अगेंस्ट, उसका स्ट्रगल होगा अश्विन के अगेंस्ट, मैं मानता हूँ ये चीज, और ऐसा नहीं है वो अपनी फ्लुएंट बेस्ट पे तो नहीं बैटिंग करने वाला, वो 700 वाली सीरीज तो उसकी नहीं होने वाली जो उसकी 2014 में आ गई थी, या फिर वो उससे पहले इंडिया में जो 2017 में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी खेल गया था, वैसी बैटिंग तो नहीं करने वाला वो। बट मुझे स्टिल लगता है उसमें अभी भी इतनी बैटिंग बाकी है टेस्ट क्रिकेट के अंदर, बात बैटिंग की बात नहीं है, एक्सपीरियंस और समझ है रन बनाने की, जैसे कि पिंक बॉल जब जब सीमा बॉबल कर रही होगी डे नाइट टेस्ट के अंदर या ब्रिस्बेन में, या फिर फंसे हो गए फॉर एग्जाम्पल अश्विन के अगेंस्ट फंसे हैं, तो उसको पता है भाई रन बनाने के लिए, मुझे लगता है लबुशेन के लिए मुझे लगता है मुश्किल सीरीज हो सकती है, उसका रन नहीं है, बट स्टीव स्मिथ जितना भाई मैंने स्टीव को अंडररेट करा है ना, जब भी मैंने उसको लगा, मुझे लगा कि ये बल्लेबाज शायद हम इसको आउट कर सकते हैं, उसने भाई जब जब रन बनाए हैं, तो मैं तो स्टीव स्मिथ को अंडर एस्टिमेट बिल्कुल नहीं करता, बिल्कुल भी नहीं करता स्टीव स्मिथ को अंडर एस्टिमेट, और मेरा सेम विराट कोहली के लिए भी मैं सम अप ये करूंगा कि भाई मैं दोनों को अंडर एस्टिमेट नहीं करता। हाँ देखो खराब सीरीज दोनों की हो सकती है, इसमें कोई डाउट नहीं, जैसे रायन ने बोला रन नहीं है सब कुछ है, बट मुझे लगता है कि यार वही बात है ना कि ग्रेट प्लेयर्स होते हैं वो ढूंढ लेते हैं रास्ता अपने लिए वो रन बनाने का, और स्मिथ और कोहली दोनों के लिए मैं यही कहना चाहूंगा कि यार मैं कोहली का एक बात तो मान भी, बट स्मिथ तो मुझे पता है भाई वो रन बनाएगा। बॉलिंग आप हमारी देख लो, हर्षित राणा से स्टीव स्मिथ का डरने लग गया और आउट होने लग गया हर्षित राणा के अगेंस्ट,
मतलब नथिंग अगेंस्ट हर्षित राणा, बट यार एट द एंड यार वो उसका पहला टेस्ट मैच है ना। आकाशदीप कभी ऑस्ट्रेलिया में खेला नहीं, मोहम्मद सिराज को विकेट्स नहीं मिल रहे, तो बॉलिंग हमारी वीक है। इस वीक बॉलिंग के आगे स्टीव स्मिथ को रन बनाने चाहिए भाई, और अगर वो रन नहीं बनाता तो मैं सरप्राइज होऊंगा काफी ज्यादा। यार अब तो मौका था ना अब रन बनाने का। पिचें मुझे लगता है थोड़ी बहुत टफ होंगी, देखो पर्थ की पिच टफ होगी है ना, और मुझे लगता है कि एडिलेड में पिच टफ नहीं होगी, बट वो जो पिंक बॉल होती है थोड़ी मुश्किल प्रोड्यूस करती है बैट्समैन के लिए। ब्रिस्बेन से लेके सिडनी तक, ब्रिस्बेन मेलबर्न सिडनी विल बी फ्लैट ट्रैक्स, फ्लैट डेक्स इन माय ओपिनियन, मतलब रन बनेंगे वहां बैट्समैनों के, इवन पर्थ में ही बनेंगे, बट ये तीन जो एंड के वेन्यूज हैं वहां पर रन बनेंगे। और आप देखना मेलबर्न में सिडनी में तो स्मिथ सेंचुरी, इफ नॉट सेंचुरी, अच्छी बैटिंग करके दिखाएगा, 4 मौके मिलेंगे, अच्छी बैटिंग करके दिखाएगा, और मुझे तो उम्मीद है वो ब्रिस्बेन में रन बनाएगा। तो मेरे तो स्टीव स्मिथ से भाई मुझे है कि वो रन बनाएगा। मैंने ये जरूर बोला था कि आउट ऑफ फॉर्म है वो, सब कुछ है, सब कुछ अपनी जगह है, बट वही बात है ना, क्लासी प्लेयर होता है, इतने रन बनाए हैं यार, तो वो अपने लिए मौका ढूंढ लेगा। और स्टीव स्मिथ 450 से 500 रन मैक्सिमम बना सकता है इस सीरीज के अंदर, और Sorry मिनिमम to cut you off. Sorry to cut you off, Aman. There is a stat coming up, lining up. उसको मैं share करना चाहूँगा. Ryan, Aman emphasized that India is not underestimating Steve Smith, because whenever India have underestimated Steve Smith, he has always scored runs. He can score runs at any kind of time. When he come back in that Ashes series in 2019, he scored runs. So they are not giving a single slump to underestimate Steve Smith. Steve Smith has always been a great pinnacle for Australian Test cricket. He has been the greatest Test batter ever to play cricket for Australia, no doubt about it. But this time, both Kohli and Smith, if we summarize this thing, this is one final chance to just stamp on their Test legacy. Just put a full stop on their Test legacy. That we are not done. We are not Yeah. done. I'd agree. Could I just add into that very quickly? Smith, he obviously hasn't been as low as Kohli has been for the past 4 or 5 years, but I do think this is a real series that is. But there's going to be an internal battle. The media will blow it up. Smith versus Kohli. That's what a lot of this series is. You know, two incredible players who haven't scored runs for a little bit. You know, Smith, he scored a 91, not out last year, not much else since the Ashes, where he scored a ton, and then the World Test Championship final, which we won just before that. Just had to throw that in there. So we have, like, Smith hasn't done too well recently, nor has Kohli. It's literally just gonna. It could be, you know, you could get another 2014 scenario where you just have a Smith and Kohli shootout, where they just score. What, Everyone wants that all the 2014 dream battle. Yeah, it'd be great to see. But I think that Smith, you can put it down to like a summer slump. Like he had a bad late 23, early 24. It's not been this elongated thing. So I don't think Smith's Test legacy rides on this as such, because he does. Because it does look like, he's been averaging, and it's just a little drop. If he stays down here, well, it could be like, well, mate, why are you still in the squad when you're averaging 30 and you've been doing this for 3 years? But if it's just a little drop and he brings it back up, he's fine. Kohli has been down here. He needs to bring it up. I think that's the difference between the two. I'm not underestimating Kohli, because he can come out here and smack us around the park. As you said, he loves the pace, loves the bounce. Just seems to love batting in Australia. He's got 11 tons here in all formats, more than in short, you are saying that Smith has the upper hand before the series, and Kohli is just a bit. Kohli wants to push his hard yards out, so there will be essentially, yeah. This will be a battle of ages. So Ryan, we need to wrap up the show because the time is getting quick. Let's move to the playing 11s, and then we will be making our personal playing 11s. I will be showing you the likely playing 11s of this particular match, which both of the medias is reporting, and then you both can add up, or you both can do any kind of changes in that playing 11. So, Ryan, I just want to know how much
are you excited for tomorrow because you have to wake up early? Oh well, I've got bloody work tomorrow, unfortunately. So the game starts at 1:20 p.m. for me. I'm at work till 5, so I'll just chuck these in and I'll listen to it while I'm working. And then it'll be So great. here are I the can't playing wait elevens, to watch it. folks. Here are the It'll playing be elevens. a great series. Yeah, can you say it? Likely playing Yeah, that's elevens. exactly what I'd pick. So first of all, Yeah. we will talk about Australia. Nathan McSweeney. The second, Usman Khawaja. Third, Manas Labuschagne. Then Steve Smith to come. Travis Head to follow. Mitchell Marsh to come. Alex Perry, the wicketkeeper. Stark, Cummins, Lyon, Hazelwood, the great Aussie bowling contingent. How do you see, mate? Yeah. This will be the playing 11 playing, and you agree with this? Yeah, picks itself. That's our best squad. McSweeney's been made opener, so he's definitely on a debut. If I had to make slight changes to that, Kawaja 1, McSweeney 2, Cummins 8, Stark 9. Just swap them around. That's what I'd say. Yeah. They wouldn't have McSweeney Yes. open up, face the first ball, but yeah, that'd be the exact 11. Arguably the best bowling lineup in the world. Okay, One of the you best keepers agree in to the this world. playing 11. Yeah, that's that. Yeah. अमान आप क्या कहते हो? यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, देवदत्त पडिक्कल, विराट कोहली, ऋषभ पंत, ध्रुव जुरैल, नीतीश रेड्डी, अश्विन, हर्षित राणा स्लैश आकाशदीप, जिस तरह इंडियन मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह कैप्टन. क्या आप सहमत हो इस प्लेइंग 11 से? यार देखो, देवदत्त पडिक्कल एक बहुत बड़ा क्या कहते हैं प्रेशर लेके आ रहा होगा ये खिलाड़ी, क्योंकि इस खिलाड़ी पे इतना प्रेशर होगा. ये एक तो रिप्लेस कर रहा है शुभमन गिल को और चेतेश्वर पुजारा वाली पोजीशन को. क्या अच्छा नहीं होता कि हम अभिमन्यु ईश्वरन को देख लेते हैं, ऋतुराज गायकवाड़ को, लेकिन हमने उस तरह उनकी क्या कहते हैं सक्सेस देखी नहीं. डेविड पडिक्कल का रीसेंट लिया जा रहा है कि रिसेंटली उसने इंडिया के खिलाफ भी अच्छी परफॉर्मेंस की, और अभी जो मैचेस हुए थे कुलदीप ट्रॉफी के उसमें भी देवदत्त पडिक्कल ने अच्छी परफॉर्मेंस की है. ये प्लेइंग 11 तो लाइकली है. अपनी प्लेइंग 11 में क्या ऐड करना चाहोगे? This is the exact same playing 11 that I was thinking, and this will be the playing 11 that will be on the toss tomorrow. This is the playing 11 which we're gonna play. Harshit Rana will play and Akashdeep will not play. I think this is the team. This is exact team what Okay. should be there tomorrow. I think this is exactly. This is not likely. This will be the team, in my opinion. And देवदत्त पडिक्कल की अगर मैं बात करूं तो देखो मुझे लगता है ईश्वरन खेल सकता था, ऑफ कोर्स खेल सकता था, बट पडिक्कल ने ऑलरेडी इंडिया के लिए डेब्यू कर लिया है, एंड डेब्यू में उसने 50 मारी थी इन धर्मशाला अगेंस्ट इंग्लैंड. तो आई मीन ठीक है, मुझे लगता है हाँ ईश्वरन खेल सकता था, नो डाउट, बट यहाँ पे पडिक्कल को मौका मिला जो कि ठीक है. मैं तो भाई एग्री करता हूँ पडिक्कल को मौका मिलने से. मेरे को लगता है क्योंकि जिसने 50 मार दी अगर अपने डेब्यू मैच में, तो उसको आप दूर ऐसा थोड़ी करोगे नहीं ना किसी किसी डेब्यूटेंट खिला दोगे उसके ऊपर. एंड ईश्वरन ने रन भी नहीं बनाए, और वही पडिक्कल ने इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के में रन भी बनाए, कुछ 90 कुछ राउंड उसने बनाई थी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट. तो मुझे लगता है एग्जैक्ट सेम टीम होने वाली है कल, एंड ऑस्ट्रेलिया की मुझे लगता है एग्जैक्ट सेम टीम होने वाली है. दोनों सेम टीम्स हैं और एकदम परफेक्ट टीम है. मेरे को लगता है ये आकाशदीप नहीं खेलेंगे, हर्षित राणा खेलेंगे, मुझे लगता है पर्सनली. सो यू बोथ अग्री, लेकिन मेरा एक इधर के कहते हैं डिफर है इंडिया की प्लेइंग 11 में. मैं अश्विन की जगह वॉशिंगटन सुंदर को यहाँ पे प्रेफर करूंगा. हाँ, मेरे से सब शायद डिसएग्री करे, बहुत से लोग डिसएग्री करे, लेकिन द अमाउंट ऑफ बाउंड्स रायन नोस द अमाउंट ऑफ बाउंड्स फॉर स्पिन इन द पर्थ विल लाइन विल आल्सो एक्सप्लॉइट. Washington Sundar was a good call from India because he has also a heavy height. He can ball with some great pace. He can vary the paces, and he is also a great bat we have seen in the last BGT as well. So, in my opinion, Washington Sundar instead of Ravi Ashwin. So, playing 11s का अपना क्या कहते हैं इख्तलाफ आ गया. Both of the guys agree with this playing 11. Both of the guys think that this playing 11 will be good. Ryan, I just want a shorter and quick note from you. Yeah. What is the threat? What is the threat in this Indian playing 11 that will be coming up against Australia tomorrow? Which player is one threat for you? What player is one what? Sorry? Which player is a threat for you tomorrow? Name one. I don't know. I actually don't know. It depends what they're doing. I tell you what, I haven't seen much of Nitish Reddy or Devdutt Padikkal. Nitish Reddy के बारे में कुछ कहना चाहे Amaan? Hey, Ryan, just want to cut you off. Amaan has something inside
for Nitish Reddy. बहुत चर्चा हो रही है इस बंदे की कि मॉर्ने मॉर्कल भी कह रहा है विकेट टू विकेट बॉल करता है, सीम अप, he has a good action, he is bowling wicket to wicket and he also bats quite well and a pace of 140, right? So Nitish Reddy is also a great lad. Aman, what are your insights on Nitish Reddy? नीतीश रेड्डी की अगर हम बात करें, देखिए ये थोड़ा सा मतलब रिसेंटली आईपीएल के अंदर एकदम से फेमस हुआ ये बंदा, है ना। इसके रणजी में इससे कोई बहुत कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं है, डोमेस्टिक में एवरेज परफॉर्मेंस है, लेकिन प्लेयर के अंदर बात क्या है, अभी बांग्लादेश के अगेंस्ट T20 मैच खेला तो उसमें रन बना दिए, तो कॉन्फिडेंट प्लेयर है कि जब मौका मिलता है तो अपने रन बनाता है, ठीक। और हार्दिक पांडे का प्लेयर हो सकता था जो हम लेके आ सकते थे, लेकिन वो भाई इतना इंजरी प्रोन प्लेयर है कि उसको आप टेस्ट करके दिखा नहीं सकते। तो नीतीश कुमार रेड्डी एग्जैक्ट मतलब लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट था हार्दिक पांड्या का। हो सकता है नीतीश कुमार रेड्डी आपको अगले टेस्ट मैच से देखने को ना मिले, बट मुझे लगता है भाई कि मतलब नंबर 7 के लिए ना, ये बहुत नंबर 7 के लिए तो ये बहुत अच्छा बैट्समैन है। ये नंबर 7 जिसकी पोजीशन लिखी हुई है, ये उससे ऊपर का बैट्समैन है, मेरे को लगता है पर्सनली, टेक्निकली भी, एंड शॉट्स मार सकता है भाई, लंबे हिट्स कर सकता है, एंड फास्ट बॉलिंग भी अच्छी करता है। 135 140 टच कर लेता है, 140 एग्जैक्ट नहीं फेंकता, 140 ओवर में एक आध फेंक लेगा मुश्किल से, बट 135 के आसपास अच्छी बॉलिंग करता है। तो सरप्राइज पैकेज हो सकता है ऑस्ट्रेलिया के लिए नीतीश रेड्डी, बट हमारे लिए भी सरप्राइज पैकेज हो सकता है मतलब नेगेटिव मैनर में, कि बिल्कुल ही खराब परफॉर्मेंस के, ना समझ में आ रही बॉलिंग, ना समझ में आ रही बैटिंग, ऐसा भी हो सकता है कुमार रेड्डी के साथ। और आप कौन सा थ्रेट देखते हो? नाम आपने जरा शॉर्ट बताना है और एक लफ्ज में बताना है ऑस्ट्रेलिया की टीम में कल की प्लेइंग 11। आई ओनली प्लेयर जॉश हेजलवुड, ही इज सच, मतलब हेजलवुड मेरे को लगता है पर्सनली, प्लेयर्स तो बहुत सारे हैं, जैसे उस्मान ख्वाजा से मुझे डर लगता है, बट वो एक स्पीड में रन बनाता है, तो मुझे लगता है हमारे पास ऐसे बॉलर्स हैं जो मतलब अगर वो 160 बॉलें खेल रहा है तो वो कितने 50 रन में पहुंचेगा। तो इस बैट्समैन से, और फिर हाँ ट्रेविस हेड खतरनाक है, कि ट्रेविस हेड को जल्दी आउट करना पड़ेगा, ट्रेविस हेड एंड जॉश हेजलवुड, नेथन लाइन भी होगा ऑफ कोर्स, नेथन लाइन भी होगा ऑफ कोर्स, बट हेजलवुड अगर एक बोलूं, अगर इफ यू वांट टू आस्क मी वन प्लेयर, दैट विल बी जॉश हेजलवुड, बिकॉज Josh Hazelwood from Aman. Ryan, he thinks he is a threat for India. And if we say, according to Ryan, there is no such kind of a player. Again, Aussie mentality. What are you, bro? I'd say Rishabh Pant. I'd say Rishabh Pant. He's Rishabh the X Pant. factor. He's the one to watch. He's the reason I think a lot of cricket fans will tune in tomorrow. Rishabh Pant, no matter what. So Rishabh Pant from Australia, and from India there is Josh Hazelwood. So let's wrap up this show. Thank you so much, guys, for joining. I will be just asking one question from Ryan. Aman is leaving. Aman has to go. बहुत बहुत शुक्रिया अमान आपका, आपने हमें टाइम दिया और आपने इम्पोर्टेंट टाइम में से आपने बॉर्डर गवस्कर ट्रॉफी के लिए बात की, क्योंकि यार ऐसी सीरीज है जिसपे मैंने कहा था कि मैं अकेले नहीं कर सकता, मुझे दोनों देशों से एक्सपर्ट्स बुलाने पड़ेंगे और मुझे इंसाइट्स लेनी पड़ेगी, और मैंने भी काफी कुछ सीखा है। अब इस पूरी 5 मैच टेस्ट सीरीज के बाद इंशाल्लाह जब हम वापस आएंगे तो हम लोग क्या कहते हैं इस पे चर्चा फिर से करेंगे, और फिर हमारे पास एक पूरी पिक्चर होगी कि किसने किस तरह खेला, क्या हुआ सीरीज में, और भी बहुत सी चीजें होगी। हम जाते जाते अपनी प्रेडिक्शन दे दे फॉर द सीरीज, क्या पॉसिबल प्रेडिक्शन लग रही है लुकिंग एट द 3-0 रीसेंट सारी चीजें, वर्ल्ड टीसी ऑन द लाइन, एज एन इमोशनल फैन भी आप कह सकते हैं, लेकिन अगर आप फैक्चुअली एज एन एनालिस्ट देखे या आप फैक्ट्स को देखते हुए पॉसिबिलिटी देखे, आप क्या देखते हैं, क्या इस सीरीज की स्कोर लाइन होगी? I want to speak with my heart. I want to see India win this series by 5-0, 4-0, of course. But what my mind says really, Australia 3-2 or 3-1 to Australia. It will be a very tough series in my opinion. We are not at our best. So I think Australia should win. I mean, Australia should beat us this time. 3-2 or 3-1. This is my prediction for the series. Australia 3-2 or 3-1. Two predictions in my opinion. Let's move to Sydney. Ryan, your predictions. What's the scoreline of the series? Heart says 5-0, but I will say 3-1. 3-1? Sydney will be a draw because it always rains, and India will nick one off us somewhere, but I do think we'll win. I want it to be 5-0, done and dusted, but yeah, I do think India will get one. You are losing in Sydney, according to No, you. it'll be a draw. It'll be a draw because of the rain. Always rain. Where are you losing? Adelaide. Adelaide is a pink ball test. Don't you remember that 36 all out?
Oh yeah, I remember it well. It was great to watch. However, I'm afraid the moving ball. Moving I don't think our ball. battlers were good Exactly. enough. Yeah. In my opinion, So Melbourne my to Melbourne, last I year. also think Melbourne, but Melbourne. there is a rare and bold scoreline from me. Both of you will not agree. 3-2 in favor of India. Just looking at the past performances, what India have done in Australia. 3-2 in favor of India. If we're looking at past performances, Virat Kohli shouldn't be playing. You've got to look at it as it is now. Again, you have kept to Virat Kohli. What is the We if got the I am point. I'm saying again and again, Virat Kohli just have to score some He some. does. He has to No, score. no, Yeah, he has to score, he, has, doesn't he? he just have to score some pooky centuries, some 2 or 3 centuries, and then these Australian will be publishing him the king, the greatest of all time. You They Australian will. also Maybe hype him. publishing what about 2 3 countries. Yes, क्या Look, कह रहे हो अमान? I am saying but they're already publishing him. या So और पब्लिश करेंगे, फिर ये और पब्लिश करेंगे, और फिर थोड़ा सा देसी तड़का आ जाता है ना, फिर हम मुझे भी इतनी क्या कहते हैं ऑस्ट्रेलिया पसंद नहीं है, हमारी भी बड़ी फैंटी लगाई है पाकिस्तान की, बट इट्स ऑलवेज लव टू टॉक on cricket with Ryan. Such a great mind, such a great cricket intellectual mind, and the insights he have on cricket. He really talks on real logic and facts. सो अमान, थैंक यू टाइम निकालने के लिए। एक दफा मैं फिर कहूंगा, जो इस टाइम माजरा चल रहा है चैंपियन ट्रॉफी का, हम दोनों मुल्क जिस तरह ब्यूरोक्रेट्स हमारे लड़ रहे हैं, पॉलिटिशियंस लड़ रहे हैं, मीडिया एक तरफ से गालियां उधर से, लेकिन जो politics should be from cricket in my opinion. चैंपियन ट्रॉफी की वजह से जो फर्स्ट फैला हुआ है, और आपने हमें टाइम दिया, और जिस हम्बली तरीके से आपने बात की, वो जो हमने काफी चीजें देखी कि वो पाकिस्तानी है, वो इंडियन है, उस चीज को हटा के आपने क्रिकेट पे बात की और क्रिकेट को फर्स्ट तरजीह दी। ये नहीं सोचा कि वो इंडिया से बात कर रहा है, वो पाकिस्तान से। आज हम तीनों जब बात कर रहे थे, वी वर टॉकिंग एज अ क्रिकेट एनालिस्ट, नॉट एज अ पाकिस्तानी एनालिस्ट, इंडियन एनालिस्ट, ऑस्ट्रेलियन एनालिस्ट। सो आई लव द camaraderie today, and best wishes to your team and you. May Allah give you a sweet victory of 3-2, which I have predicted. Thank you, mate. अपना ख्याल रखिएगा। Thank you both of you. thanks, Amaan. Lovely meeting you. Thank Good you. to meet you, mate. Okay, Ryan, we again as solo. Let's talk about Pakistan. What do you say? Nah, I don't want to talk. Pakistan. Yeah, Pakistan. Yeah, no, I'm happy to talk about Pakistan. Oh, But okay, this Ryan, is I straight have a ones, and they question. can't play Okay. T20 cricket. Exactly. Just a little bit. Yeah. You got a question? Right, there is a serious question. I didn't ask for Aman because he was leaving for some work. I wanted to Yeah. ask him as well. In the last border Gavaskar, Tim Payne was your captain and he faced criticism for some costly missed opportunities behind the stumps, not so good with batting, and some controversies as well. With Pat Yeah. Cummins now leading and Yeah. taking over as a proactive and successful captain, and his record against India, everyone knows what he is capable of. But do you think his leadership can eliminate such lapses and instill a sharper, more disciplined approach in the team? How crucial will his bowling brilliance and strategistic mindset against a wounded Indian side? Tim Payne as comparison to Patrick James Cummins. Tim Payne. Yeah, look, I actually didn't I mind him. think I I didn't think mind him. He was, Australia. There was one of the reasons that why Australia lost to India twice in their home soil because of Tim Payne's poor captaincy. see, I didn't mind him. Everyone has a go at him for the get you to the Gavarash thing, but that's an understandable thing to say. We hadn't lost there in 30 years. You'd expect us to win there. I think you look at that series last time. We should have won in Sydney. Hanuma Vihari and Ravi Ashwin, we should have gotten them out in 2 sessions or 3 sessions. Vihari had a torn hamstring or whatever. That was poor bowling. That wasn't poor captaincy. That was poor bowling. I'm not putting Sydney Tim on Payne also Tim Payne. dropped some setters. I remember. I'm not putting Sydney on Tim Payne alone. I think we should have, if you've got a tail end bat and someone with a torn hamstring, you should be able to get them out, no matter how defensive they're playing. That was poor bowling. The Gabba, the difference there
I think you had two things. It was it was an overconfidence from Australia as a whole, because you look at that Indian squad at the Gabba, and half of those names you haven't heard again. Washington Sundar's only just come back onto the scene in the test team. Was it Natarajan as well? He dropped off the face of the earth after that test. He I didn't mind Tim Payne as a captain. He was chatty behind the stumps. He's a bit of a flog, but on the field and in the media. But that's what you get out of Australian cricketers sometimes. Pat Cummins, on the other hand, he would have done his research. He'd be all over this. He'd know exactly what's up. We just lagged out for a bit. Can you hear me? Yeah, I can hear. Okay, cool. Yeah, we just lagged out for a bit. Cummins, he would have done the research. He would have put the team through the paces. I feel like they'll be disciplined. There won't be too much chat in terms of giving it a bit of sledging. I like a bit of sledging. I love hearing the stump mic conversations. I love hearing the tensions raised. I don't think there'll be too much of that. We won't want to give India any ammunition to fight back, because we saw what happened at the Gabba last time. They had that. We can't wait to get you to the Gabba. Then they won, which anticlimactic for us. You shouldn't be losing at the Gabba, and then we lost there last year as well, or earlier this year, whatever it was. I think Cummins. He leads from the front with the ball. He averages just over 19 with the ball in Australia. You don't do that in Australia. No one. And he knows India better than anyone else. Indian players, Indian culture. He knows India. He doesn't seem egotistical. He doesn't seem to get in over himself. He lets other people do the work when it's time for other people to do the work. I was a critic of him with his captaincy at the start. I thought he was way too passive, way too defensive. But you've seen what he's kind of built, and he's built this kind of model where you have a team, everyone knows their job, and he can think of something on the spot. And the biggest thing that I think is bowling first in that World Cup final. But I think he's a good player, great captain, great bowler, leads from the front, and that'll be the difference, leading from the front this series. Thank you, mate. You summed up very greatly. And I wanted to know one question as well. With Jasprit Bumrah set to lead India in tomorrow's crucial encounter against Australia in the absence of Rohit Sharma, a big miss, how do you assess his leadership qualities, and what do you think the impact he will be bringing with his captaincy? Will Australia gonna be on the back foot because the bowler captain will be captaining the side, and what kind of performance you expect from him, especially in a high pressure, intense counter, that too on Optus Stadium? I can see Jasprit Bumrah. I haven't seen him captain. I don't know if he captains in the IPL or I haven't seen him. He has captained one time against England, where England chased down 360 in 50 overs, where Bairstow scored some. In England, yeah, okay. Yeah, remember okay. where he's yeah. Yeah, see, Jasprit Bumrah as a captain, I'm not sure. You don't see him in the field. You don't see him setting fields. You don't see him running around telling people what to do. He leads from the front with the ball. He'll if they One thing more to add, Ryan. Jasprit Bumrah, when he captained the side against England, he underbowled. He didn't bowl quite a much. Yeah. Reports were coming that he was having a back injury, but Jasprit Bumrah didn't bowl. Sometimes captain, but they they get low of confidence. They don't bat like you have seen Sarfaraz Ahmed from Pakistan, like you have seen Pat Cummins. Pat Cummins is different from other captains. When you are captaining a side, you don't come and bowl quite as you do when you are a bowler. Yeah, I think he'll either. I don't think he'll get it right in the first innings anyway. He'll either overbowl himself or underbowl himself. I don't think he'll get it right in the first innings. Just because I don't think he's had that experience of going, oh crap, I should be bowling now. Game needs this. He'll be thinking about too much. He might bowl one over too little, a couple overs too long, whatever. I don't think he'll get it right first innings. I think he'll grow throughout the game, but
as you said before, when I was having a go at Virat Kohli, and you said that Jasper Bumrah said that Kohli will be leading the team. I wouldn't be surprised if you get more of a Kohli kind of style captaincy in field placements and intensity, because I haven't seen Bumrah, I haven't seen him do it well. Obviously, they had that one where England chased 300 odd. But I think if he gets the new ball tomorrow and he takes 3 in his first spell, which is it's Jasper Bumrah, he can do anything. He'll just have all this momentum behind him. He'll probably bowl 8 overs straight, and he'll just keep going. All the fielders will be up for it. But if it just doesn't go well, there might be this kind of power imbalance where he doesn't know how to set a field, or he doesn't have the bowling changes just quite right. And then you have like Virat Kohli trying to help him with the field, and then Rishabh Pant maybe as a keeper. Keepers are pretty good at setting fields. There might just be kind of this power imbalance. But he said in the press conference that fast bowlers possess a great mind. Fast bowler's mind is way better than any captain. Well, I like the confidence. You don't see many fast bowler captains, so that kind of undermines. Imran Khan has been great. from Pakistan. Pardon? Imran Khan from Pakistan. Did you say? Oh yeah, Imran Khan. Yeah. But you don't see much. You didn't see Dale Steyn captaining South Africa, or if you did, it wasn't consistently. You didn't see James Anderson captaining England. You didn't see. I could go on forever with all these fast bowlers. Obviously, they see it a different way. But this will be a great battle, right? This will be a great battle. Yeah. This will be a great battle. Yeah, it'll be a great battle, but I think Cummins is ahead because he's done it. Cummins is obviously ahead, but fast bowler versus fast bowler, and that too as a captain, that too as a frontline pacer, because Bumrah has 32 odd wickets with an average of 21, 2.37 economy in Australia. He will be raring to go tomorrow. So Ryan, let's wrap up this show. Yeah, you have to go 11:30 a.m. Sydney right now, and you wake up early as well for the work, and then you have to also watch the test match. Everything is on the line. I will be watching at 6:30 at Pakistani local time. It will be tough for me, but I have to wake up because it is the biggest test series happening right now. So I'm quite excited. Everyone is quite excited. Let's see who is going to win. You have predicted that Australia is winning 3-1. So there will be a lot coming ahead for us. Thank you, mate, again, joining us, sharing your deep dive analysis, analysis and your statistical, factual presentation. I loved every bit of it. And that Virat Kohli one, Virat Kohli will tell you what he is capable of. Possibly. Have a great life. Right. Have a good one, mate. Have a great life. Have great fun. We'll see what India and Australia. Sounds good. You just froze for me. But have a good one, mate. Have a good one.